ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਰਹੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਪਲੇ ਆਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਵਾਲ। ਕੋਈ ਟੋਪੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ? ਟੈਗ ਲਾਏ ਨੇਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਜੀਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖੇ ਆ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ? ਭਵਿੱਖ ਐਵਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੇਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਮੂਵਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਔਖੀ ਗੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਤੇ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਚੁਣਨੀ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੈਟਰ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਡ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੱਥ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਜੁਗ ਆ ਜੇ ਪਰਲੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਡੇ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜੇ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲੇਟਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਧਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਤਰਫੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਧੂਰਾਪਣ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਆ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਉਲਟੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹ ਉਲਟਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਉਲਟੀ ਘਾਟੀ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 'ਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਤਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਅ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਦਣ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਐਸਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡੂਮਸਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਤਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਆਸ ਜੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਰਾਹ ਸਹੀ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੇਮ ਉਸ ਐਸ ਪੜਾ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੂਵ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖੇਡ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਰਚੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਨੈਸਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਦਣ ਉਹਨੇ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੁੱਦਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਰ। ਚਲੋ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰੂਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਓਪਨ ਟੂ ਆਲ ਤੇ ਰੀਪਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਰੀਪਲੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੋਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਖੀਰ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਵੇ, ਉਹੀ ਰਾਹ, ਫੇਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਭਵ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿਸਬਾਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਏਡ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਟੀਚੇ ਭਾਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਜਾਣੀ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਓਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, हाँ जी राज जी, मैं बंद करने की सोच रहा था, पर अगर कोई छोटी मोटी बात आपने करनी है तो फील फ्री, रेज हैंड। और जी कैसे हैं? Sorry, I was talking on mute. ओके, इट No, या या नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, घूम दिख गया था, आ गया कोई। बट ये था मेरे दिमाग में था कि माइंडफुलनेस जो है ना, वो क्या मेडिटेशन सिखिज्म में भी है क्या? नहीं, ये मैं तो वो तो लोगों ने बना दी, मैं तो जैसे लिटरल मीनिंग लेता हूँ, तो मेरे लिए माइंडफुलनेस, आई नो लोग ना फर्नीचर सोफा बदल के फिर सोफा लेके आते हैं, उसको कहते हैं नया डिजाइन है, तो ये नाम बदलने वाले जो धंधा है वो बदल रहे हैं। मेरे लिए तो माइंडफुलनेस और अवेयरनेस और बीइंग अलर्ट, बहुत पहले से लोग कहते हैं कि बी अलर्ट, बी बी अवेयर, सो बी माइंडफुल, उसके लिटरल मीनिंग तो यही है। उसके राइट, बाद में कहानियां जितनी मर्जी जोड़ते जाओ उसके साथ, आंखें अंदर और बाहर की खोल के रखो, दैट्स व्हाट आई मीन। बिल्कुल बिल्कुल। पर टेक्निक्स है इसमें, इसमें टेक्निक्स, वो रिकमेंडेड वो टेक्निक्स। आई नो, सो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, पेन किलर्स हैं, so क्योर नहीं अच्छा है, जो टेक्निक्स अच्छा है। अच्छा। तो किस तरह या की, हाँ, एक का बताओ किस तरह की, मतलब थोड़ा सा एग्जांपल सो देखिए क्या क्या फॉर होता मी, लाइक मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रैक्टिस जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस है नहीं उसमें। है। उसमें तो आप, यू नीड ए क्लैरिटी एंड देन यू जस्ट नीड टू कीप इट इन फ्रंट, इन इन योर, लाइक आप उसको अपने ध्यान में उसको रखना है। आप जब भी अगर कहीं पे बिजी भी हैं लाइफ में हाँ हाँ और किसी चीज में इतने एंगेज हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा हो ही जाता है, अगर आप कहीं जाएंगे तो उस जगह का गुस्सा भी हो सकता है, आप कुछ भी है, तो हाँ वो इतना आपके सामने चीज की क्लैरिटी आ जाए, जो आपका रेस्टिंग प्लेस है और वो बड़ा हाँ, लाइक एविडेंट हो, तो आप इंस्टेंटली, आपको कोई ऐसा नहीं भी कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। you just need to turn your mind back to that, that's it, instantly, and you are all, instantly you are done। so प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रह जाएगी उसमें, तो उसकी the whole point is contemplating, understanding and moving forward and towards the flawless clarity। so ये इसका प्रोसेस है। so जो हम्म प्रोसेस है, वंस पहले तो आपको सीख करना है अभी, लाइक आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, रिलेटिव थिंग्स, सब्जेक्टिव थिंग्स, एवरीथिंग, दैट्स फाइन, बट आई नीड दैट विच इज लाइक फ्री ऑफ ऑल दिस, एंड देन वंस यू गेट दैट, यू गेट क्लैरिटी, देन यू, तब आप उसकी कंटेम्पलेशन करोगे और ध्यान रखोगे उसका, उसको उसको और उससे क्या होगा, जब उसको कंटेम्पलेट करोगे तो जो चीजें अननेसेसरी आप कैरी कर रहे थे वो फिल्टर आउट करते जाओगे। तो वो जो प्रोसेस है वो एक्चुअली किसी तरफ जाने का नहीं है, कुछ अचीव करने का नहीं है, वो बेसिकली अनबैग करने का, अनवांटेड हम्म, क्रैप को। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो, हम्म, आप ऑलरेडी कहीं बहुत दूर निकल चुके हो, हाउ फार यू वेंट उस पर डिपेंड करता है प्रोसेस भी, वापस आने में कितना टाइम लगेगा। राइट राइट राइट, अच्छा ओके। सो आप जा नहीं रहे हो, आप वापस आना है आपको, और वो जितना दूर चले गए, जितना बोझा उठा लिया, उसको अनपैक करने का प्रोसेस वो डिपेंड करेगा जी। अच्छा, लेकिन वो उसमें जैसे ये है ना इनका, लाइक लाइक ये बुद्धिज्म विपश्यना है, राइट? हम्म और बाकी जगह मतलब हिंदुइज्म में मल्टीपल हैं इसके, राइट? जैसे अजपा जपा है, और दूसरा जो टेक्निक है वो या अंतर्मौन सो अंतर्मौन है। उनमें ना हम्म एक देयर आर स्टेप्स दैट यू नीड टू डू, राइट? फॉर एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आते हैं, योग निद्रा इज देयर, उसमें हाँ उसके वेरिएशंस हैं, बट ओवरऑल टेक्निक्स भी हैं उसमें, दीज आर द फोर स्टेप्स दैट यू हैव टू डू। तो या ऐसे नो कुछ फोर देर, स्टेप्स हैं नो सिखिज्म में नो नो मेडिटेशन देर इज के नो, साथ। इवन इवन सूफियों में वो चालीसा करते हैं, 40 दिन तक लोग बहुत कुछ भूखे रहते हैं, कई कुछ करते हैं, बट नो, हाँ
ऐसा एक्चुअल जो रियल प्रोसेस है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन यूज दैट इफ आपको अभी उसकी हैबिट बनी है, Uh-huh. आप उसमें से चलते हुए जहां पे भी जो आपको अभी पेन किलर का या कंफर्ट जोन का या शॉर्ट और लॉन्ग ड्राइव का इफेक्ट दे रहा है, ब्रेक दे रहा है, Mhm. वो ब्रेक वाला प्रोसेस लेते हुए, बट Mhm. आपके जो माइंड है उसको, Mhm. वैसे भी ये शब्द है ना जो फोकस और Mhm. मेडिटेशन, Mhm. मैं अगेन आई गो फॉर लिटरल, लाइक एक्चुअल लिटरली यू कैन नॉट मेडिटेट। बेसिकली मेडिटेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो कंसंट्रेट योर अटेंशन टू Right. समथिंग। Uh-huh. सो इफ यू नीड समथिंग टू कंसंट्रेट, Right. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैंट से विचार फ्री हो जो, थॉटलेस हो जो, वैक्यूम कर लो, वॉइड कर लो, यू आर नॉट Uh-huh. मेडिटेटिंग, एक्चुअली यू आर रनिंग और स्टॉपिंग योर थॉट्स। Uh-huh. Yes. So yeah, so and then people find some different stuff, कोई मोमबत्ती पे कर रहा है, कोई किसी पे, कोई किसी पे, कोई किसी मूर्ति का, किसी देवता का, किसी का Uh-huh. बुद्ध का ध्यान धर रहा है, कोई किसी का कर रहा Mhm. है। Mhm. पर वो सारी चीजें जिन पे आप मेडिटेट कर रहे हो, ऑफ कोर्स उसके अराउंड जो स्टोरी है आप उस अवस्था में तो चल जाओगे, बट वो जो स्टोरीज है और वो जो चीज पे आप मेडिटेट कर रहे हो वो तो खुद कहीं ना कहीं पे इन मिडल समवेयर है। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो या ये it will help you. It will या definitely work for you short temporary effect. हाँ सो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप ठीक है, बट उसके अंदर अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि ये भी सस्टेनेबल नहीं है, परमानेंट या नहीं है, देन बी रेडी टू मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, या मूव फॉरवर्ड। या एंड वंस यू गेट समथिंग दैट फोकल पॉइंट 360 फोकल पॉइंट, और वो जो संपूर्ण है, फ्लॉलेस मैं बात कर रहा हूँ, कई बार कहता हूँ कि जो लिटरली इटर्नल है, फिर आप एक्चुअली मेडिटेशन तो उसके बाद शुरू होगी। या फोकस ध्यान तो फिर लगाओगे ना, ध्यान अगर सबसे वर्दी चीज मिल गई ध्यान लगाने के लिए, उसके बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो टाइम काम चलाऊ चीजें हैं वो। हाँ तो वो काम चलाऊ में ना दो चीजें मैंने अभी एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, यू नो एक इनका जो ये जो बता रहा था ना मैं आपको कि ये जो ये कश्मीर का शेविज्म है, हम्म उसमें एक मेडिटेशन टेक्निक है, उसमें ना बंदा ही वाज, आई थॉट ही वाज जोकिंग राइट, बट हम्म उसने उसको पूछा किसी ने, यार मैं जस्ट सुन रहा था इसे, हम्म उसको पूछा किसी ने कि यार मैं ध्यान कैसे लगाऊं, तो उसने बोला कि आलू और गोभी, हम्म, आलू टमाटर, राइट। तो वो बोलता आलू टमाटर करो, तो बंदा ना 4 दिन तक उसको आलू टमाटर कराता रहा, ठीक है। राइट। और मैंने कहा यार ये बंदा तो मतलब घैक बंदा है, ऐसे नहीं बोलेगा ये, मतलब ना ऐसे नहीं बोल रहा होगा ये, कोई मजे नहीं ले रहा उसके। हम्म तो उसको वो बोला, तो यहीं पे इसी क्लब हाउस में बंदा उसको आलू टमाटर, पोटैटो टमाटो, पोटैटो टमाटो। हम्म तो मैंने कहा ये करवा क्या रहा है यार। हम्म तो देन आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द स्कॉलर फ्रॉम साइनोजे स्टेट यूनिवर्सिटी। हम्म वो बंदे ने बोला, वो उसने उसका बताया कि ये जो जो मिडल में है ना, बिटवीन योर ट्रांजिशनिंग, हम्म जो प्रोसेस ट्रांजिशनिंग है उसके बीच में जो है ना, दैट्स द पॉइंट यू लुकिंग फॉर। या और मैं इसको मेरी एक्सप्लेनेशन ये है, हम्म वो ये चीजें हैं, जैसे आजकल फिजिट टॉय मिलते हैं ना, कुछ हम्म बच्चों को होती है, यस और मोस्टली मैं वैसे ही बात करूं, कुछ लोग फिजिट। जो हाँ लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं वो मोस्टली स्पेक्ट्रम में होते हैं, हाई हाँ फंक्शनिंग होंगे बट समवेयर दे आर इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और समथिंग, ये दे आर हाँ नॉट नॉर्मल बेसिकली। यस सो या सो वो क्या है अभी, आजकल वो बच्चों के लिए फिजिट टॉयज मिलते हैं, अभी वो कंसंट्रेट ध्यान लाए, तो ऐसे ये चीजें हैं, ये आपको लेके नहीं कहीं जा रही, ये राइट। आपका इधर उधर से ध्यान हटा रही हैं, बट आप जा कहीं, तो क्या होता है, कुछ लोग तो इसको फिजिट टॉय की तरह यूज करते हैं, बट उनकी अटेंशन कहीं और जा रही है, उनका जो थॉट प्रोसेस है इस मूविंग फॉरवर्ड, वो आलू टमाटर कोई एम नहीं है उनका, जहाँ उस पर ध्यान नहीं लगा रहे। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, हाँ पर इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, हाँ बहुत सारे लोग आलू टमाटर पे बच जाते हैं। एग्जैक्टली हाँ। नहीं बट सो वो वो तो मैं इसका जो कौन है हाँ ना, ऐसे अभी मैं बताऊं, ऐसे जैसे सिख समाज में भी ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हाँ हैं, वो वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहते हैं, जो हाँ जैसे है ना, तो हाँ ओ जपा जा पजा, वो क्या है, वो आप अपना मंडल एक क्रिएट करे, आपकी ऑलरेडी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनी होती है सबकॉन्शियस में, राइट राइट। आप उसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो, एक रीइंफोर्स कर अपने रहे हो। अराउंड खुद ही बोल रहे हो, खुद ही सुन रहे हो, और वो जो आप
अपने अराउंड एक और मैं उसको बोलूंगा एनर्जी स्फीयर या एक बबू न्यू हम्म, टाइम बबल जो है ना, विद इन द हाँ हाँ बिग टाइम बबल, आप एक छोटा यूनिवर्स अपना क्रिएट कर रहे होते हो। हाँ 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 तो हाँ वो उसको अपने सबकॉन्शियस को स्ट्रांग कर लेते हो और आप उसी की तरफ फिर बहुत स्ट्रांग फैनेटिक और जुनूनी हो जाते हो। हाँ, हाँ। वो तो वो प्रोसेस जो है वो मोस्टली बंदे की वो कुछ खोज नहीं रहा था, वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको स्ट्रांग कर रहा था मोस्ट ऑफ टाइम। आई सी, या नो, उसकी यू नो, कन्विक्शन जो है ना, उसको कन्विक्शन को स्ट्रांग कर रहा होता है। तो राइट पर राइट, जो एक्चुअल प्रोसेस है वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये जो नहीं लोग मैं, कर रहे हैं। राइट राइट, तो आपने अजपा जाप बोला ना, अजपा जाप हम्म। बोला आपने, वो हाँ। है सिखिज्म में? नहीं तो वो भी लोग करते हैं ना, तो वो जो है अगर आप किसी चीज को जप रहे हो और उसी को हाँ जप रहे हो और उसको अंदर सुन रहे हो, बाहर से सुन रहे हो बोल के या अंदर से सुन रहे हो, हाँ, आप अपना एक 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 आपने बहाना ले लिया किसी नाम का, पर उसके बिहाइंड आप अपना मंडल क्रिएट कर रहे हो। हाँ, ओके जो ओके, जो असली प्रोसेस है ना, जो ये शब्द सारे आए हैं, हाँ जितने हाँ भी ट्रेडिशन थी ना पुरानी, जपा हाँ हाँ जाप कुंडलिनी, ये हाँ, सभी ट्रेडिशन के वोकैबुलरी से शब्द तो आ गए, ये नाम तो आ गए हैं। राइट राइट, और एक्चुअल जो प्रोसेस है वो ये है कि जो एक जो असल में है ना योग जगत, एक्चुअली क्या है, जो असली तरीका क्या है, उसको बोला गया है भी ये तरीका अगर तुम कर लोगे। हम्म, तरीका क्या है भी, बाई स्टेट है ये, एक्चुअली इसमें हाँ जर्नी भी नहीं है। हाँ हाँ, ये बाई स्टेट प्रोसेस भी जहाँ एक्चुअल जुड़ना कहाँ पे है, जब वो क्लियर हो गया और हम्म, उसको तो आप अपने ध्यान में ले आए, समझो आपका असली अजपा जाप हो गया। जो लोग समझ रहे थे मेरा अजपा जाप हो गया तो मैं मुक्त हो अच्छा, गया, मोक्ष या मेरा, राइट, तो जो यहाँ पे है सिस्टम, उसमें अभी अगर आपने ये प्रोसेस आपका फुलफिल हो गया, हाँ यू हाँ, थिंक अगर तुम्हारी वोकेबलरी में, तुम्हारे संप्रदाय उसमें अजपा जाप का है, तो तुम्हारा समझो अजपा जाप हो गया। अगर हम्म किसी के संप्रदाय में अभी कुंडलिनी खुल रही है, समझो तुम्हारी वो होगी। अगर हम्म, किसी के में बड़ा स्ट्रांग है अभी हमारा महामंत्र है, वो महामंत्र अगर ये हो गया तो समझो भी तुम्हारी वो उसकी सिद्धि होगी। सो आई सी, दैट्स द थिंग। सो these terminologies are there, but the हम्म terminology is actually used that this is the process, and if you दिस ये हो गया पूरा, तो समझो आपका जो जिसको आपने हाई स्टेट दी हुई है अपने माइंड में भी, ये मेरा होना चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे प्रकाश, मुझे ज्ञान होना चाहिए, मुझे प्रकाश हो जाए, मुझे अनहद ना सुझे। सो द मोमेंट दिस हैपन एंड योर माइंड रिजॉल्व, जिस दिन आपका माइंड रिजॉल्व हो गया ना, तो समझो योगी को बोल दिया भी तेरी कुंडली नहीं खुल सूरज की, तेरा वो हो गया, तेरा तेरे एक्चुअल हृदय में चरण कमल आ गए। सो हम्म दैट्स द प्रोसेस। सो टर्मिनोलॉजी लोगों को वो बड़ी स्ट्रांग बैठी होती है लोगों को मन में, तो उनको उसी पे देन इट्स एक्चुअली हैपन। हाँ। एक ना बंदा है यहाँ पे, एंड्री ह्यूबरमैन, स्टैनफोर्ड में है जी। वो योग योग निद्रा पे रिसर्च कर रहा है वो। हम्म और मतलब ये, आई मीन यू नो, वी आर प्रॉब्ली डूइंग फॉर हायर पर्पस, राइट? बट हम्म जो जो माइंड की स्टडी है ना, उसमें स्पेशली जो आपका ये नो, इस इन टेक्निक्स का ना वो काफी एडवांटेज देख रहे हैं, दे आर एबल टू डॉक्यूमेंट इट ऑफ प्रॉपरली। कोर्स, ऑफ कोर्स इफ यू आप बेसिकली, मोस्टली क्या होता है एक्चुअली में, इन मोस्ट केसेस इट्स नॉट पे आप ज्यादा हो रहे हो, आप साइकेडेलिक्स की बात करते हैं। या साइकेडेलिक्स जो है वो सेम थिंग इन प्रोसेस में भी होती है प्रीटी मच, यस, लेस और मोर। एग्री, सो वो आपको आपकी कोई ज्यादा एक्टिवेट नहीं करते, वो बेसिकली रीसेट कर देते हैं और सिंक्रोनाइज कर देते हैं, और माइंड की जो न्यूरॉन्स है ना, उनकी सिंक्रोनाइजेशन होना अच्छी बात नहीं एक्चुअली। और उसमें क्या है, वो क्या करती है, वो आपकी जो ऑलरेडी पीक कन्विक्शन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। हाँ, तो आप जनून में हो जाते हो, फिर वो एक आप उसी आइडिया को बहुत स्ट्रांगली ले लेते हो। हाँ, इनोवेशन खत्म हो जाती है उसमें से, क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है ना, हाँ, इनोवेशन तो रैंडमनेस और डिस्ट्रप्शन में से आएगी। यस, आप अगर डिस्ट्रप्शन को रोक रहे हो, वो आपके लिए ठीक है, यू विल फील गुड ऑफ कोर्स। यस, वैसे यस, नशा करके भी यू विल फील गुड। हाँ, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ यार रोज का जो है ना, मेरी स्ट्रगल सी खत्म होगी, अब मैं थोड़ा आनंद में हूँ। राइट राइट, बट नहीं वो, जो एक्चुअल जो जो कुछ आगे करता, आगे को जाता है, वो होता है जो एक्चुअली डिस्ट्रप्शन को और डिस्टरबेंस को और जो जो विचार आ रहे हैं हाँ, थिंकिंग को इंजॉय करता है। वो वेरी रेयर लोग होते हैं जो इस चीज को इंजॉय करते हैं।
राइट, मोस्टली राइट। मोस्टली लोग इसको समझते हैं भी दिस इज सम काइंड ऑफ डिजीज, आई वांट टू गेट रिड ऑफ, एंजाइटी हो जाती है लोगों को, है ना। सो या। वो उनके लिए है भी, आपको थोड़ा सा जैसे ना लॉन्ग ड्राइव जाए, शॉर्ट ब्रेक ले ली, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। मूवी देखने चले गए, ब्रेक लेते हैं यार, मूवी देखते हैं, कोई पर्पस नहीं है ज्यादा, बस ओहो आपने वो ब्रेक लेने के लिए तो ठीक है, और आपका थोड़ा बहुत वट एवर यू आर डूइंग, उसमें आपका फोकस जरूर इंक्रीज हो जाता है, तो राइट, जो नहीं। ऑलरेडी आप कर रहे हैं। या मेरा जो एक्सपीरियंस है ना इसमें, लाइक मैंने एक्चुअली, एंड दिस वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस, मेरे हम्म को ना एक बार आई हैड सम प्रॉब्लम, आई वाज इन शिकागो हम्म एंड आई वाज सिक, सो आई हम्म डिड सम, आई थिंक नाइट क्विल वगैरह ज्यादा ले लिया मैंने रात को। हम्म हम्म ठीक है, तो आई राइट, पोइट्री लिखता हूँ मैं, सॉन्ग्स लिखता हूँ। हम्म तो हम्म उस टाइम पे जो वर्ड्स मेरे पास आए थे ना, हम्म मतलब जो फ्लो जिसे कहते हैं ना, उतरना, हम्म हम्म वो वो बड़ा स्ट्रेंज था एक्चुअली। या आई वो नो। मेरा, और मैं हाँ, इसको ऐसे नहीं कहता मत करो, मोस्ट दुनिया, इवन हाँ, आई नो पीपल नहीं, नियर मेरे एंड को बात डियर, खत्म, दे नीड इट एंड आई एम लेट मी, फाइन विद इट। हाँ, लेट मी हाँ जी, फिनिश, मैं बोलिए, जो मेन करिए थ्रोट तक करिए। पहुंचा नहीं गया। तो मुझे वो हुआ, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि ना वो वर्ड्स जो थे ना, मतलब वो, जैसे समझ लो मैंने पूरे पूरे 20 स्टैंजर्स लिखे, राइट। उनमें से 4 स्टैंजर्स होते हैं जो उस लेवल के होते हैं, बाकी जो होते हैं ना उनको सपोर्टिव करने के लिए मैंने क्या होता है कि यार ओके यार, अब ये पूरा खत्म करना है ना। वो जो थे, वो जो भी दिमाग में आया था वो उसी लेवल के थे, सारे के सारे एक लेवल के, और बिल्कुल सॉलिड। तो मैं सोचा था यार कैसे हो गया वो दिमाग में ना, और वो उसके बाद मेरे को ये याद है कि वो सॉलिड थे और परफेक्ट थे, बट मुझे ये याद नहीं है क्या है वो, राइट। तो उसके बाद क्या, मेरे दिमाग काफी टाइम तक घूमता रहा है कि क्या है वो। देयर इज वन मोर थिंग विद दिस, सम ऑफ दिस मेडिटेशन, आई हैव अचीव्ड ट्वाइस दैट स्टेज, कि उसमें, और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट किया, एक के बाद मैंने डॉक्यूमेंट किया उसके, वो स्टेज जो होती है ना, कि अल्फा या बीटा वेव जो भी बोलते हैं वो, उसके बाद मैंने लिखा। और वो भी, मतलब वो देयर वाज स्ट्रेंज, सो आई मीन, वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो पता नहीं कहाँ से डिग करके लाया था मेरा दिमाग, समझ रहे हैं आप। या तो एग्जैक्ट। सो ये, मैं जो एक्चुअली ओके, सो आप, मैं स्पेकुलेट करता हूँ, आप बताइए वो था कि नहीं। हम्म, तो जो मैंने पहले बात की थी, कहीं ना कहीं आपके आइडिया तो आ रहा था, आपको शब्द नहीं मिल रहे थे, वो चीज जुड़ नहीं पा रही थी, पिक्चर नहीं यस, बन रही थी, बट यू ऑलरेडी हैव समवेयर इन सबकॉन्शियस दिस इज व्हाट आई वांट टू राइट। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो करने के बाद आपका वो जो है वो सारा वो पिक्चर क्लियर होगी, और ऑटोमेटिकली वो उसको शब्द भी बन गए, और सारी वो लय बन गई। इज दिस व्हाट हैपेंड? यू नो व्हाट, अब एक्चुअली जो जो फाउंडेशनल आइडिया है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आई विल टेल यू, सीक्वेंसेस की, किसी ने मुझे बोला यार कि इस पे सॉन्ग लिख दे तू, राइट। हाँ सो हाँ वो मेरे पास एक एजेंडा है, प्रोजेक्ट है, स्क्रिप्ट है, राइट। हाँ एक सिनेरियो है जिसपे लिखना है। हाँ हाँ तो उसमें क्या है कि उसमें मतलब मैं भर रहा हूँ, दैट्स वन थिंग, राइट। हम्म दूसरा ये कि एक सडनली जो होता है ना, कि सॉन्ग एक दिन में तो बनता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में पक रहा होता है काफी सालों से वो। हम्म लेकिन ये जो जो ये सडनली आते हैं ना, ये एक गश के साथ आते हैं। हम्म You don't feel that you own it. It's a net हम्म new thing. You never thought about it, and it came. या So वो जो है ना, वो आपके मैं मतलब एफर्ट्स के साथ नहीं आया था, पर जब आया तब आप एफर्ट नहीं करे थे। मैं एफर्ट कुछ नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं, हाँ बस जो लिखा वो सॉलिड, मतलब चेंज नहीं किया हाँ उसको। हाँ तो जी। ये जो चीज थी ना, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट किया। तो देर आर, देन दैट्स व्हाई आई वेंट इन ऑल दीज मेडिटेशन टेक्निक। या वन ऑफ देम इज, इट्स अंतर्मौन, सुना होगा आपने। अंतर्मौन के अलावा एक और है, वो उसमें क्या है कि उसमें ना चिदाकाश धारणा है, वो उसको कहते हैं। हाँ जो चिदाकाश धारणा में एक्चुअली वो इट्स अ डिटेल्ड टेक्निक, कि आपको अपने हाँ माइंड को, आप उसमें पता है कि वहां नहीं जा रहे आप, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर अचीविंग द मोक्ष और समथिंग गॉड गॉड अचीवमेंट नहीं है या वो। वो एक तंत्र है। हम्म और उस तंत्र इस तरह का है कि वो बता रहा है आपको कि आप अपने माइंड को ना कैसे एक्टिवेट कर रहे हो, आप अपना, मतलब फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू हाउ डू यू हैव द, जो फोटोग्राफी मेमोरी है ना, उसको कैसे इनिशिएट कर रहे हो आप, या आप हम्म इन चीजों को कैसे कर रहे हो। तो ये टेक्निक्स बड़ी गजब की हैं एक्चुअली। हम्म सो अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अलग अलग यहाँ पे भी है, जैसे डेविश और सूफीज्म का है, डिफरेंट हाँ, है, इधर क्रिश्चियनिटी में भी बहुत है और है। सो ऑफ कोर्स लाइक हर एक बंदे की लाइफ में या, उसका ऑलरेडी, किसी ने कोई काम करना है तो उनके लिए दे वर्क फॉर इन या, माय केस।
I don't know, like I have all these experiences and things without even like doing some process. But whatever those experience people achieve, Mm-hmm. I went through them, but I didn't settle them. I didn't find something like I said. So, but when I leave the efforts or something, even thinking about it, something. Mm-hmm. So जो मैं जिसकी क्लैरिटी की बात करता हूँ वो भी इंस्टेंटली हुई है ना. Mm-hmm. बट वो ऐसी है अभी ना, तो उसके लिए तब और अब भी मेरे को, फॉर मी आई हैव नेवर फील और नीड एनी ऑफ दिस प्रोसेस एवर I see. or before, and those processes or without processes I do have spiritual experiences. I still can, I have access, I can any time fly on any of them. But वो Mm-hmm. मेरे लिए एक बाग की सैर है जो Mm-hmm. जाके अपना entertainment है, that's it, nothing more Mm-hmm. than that. और जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्लैरिटी, उसको वो इतनी होगी कि वो नहीं जाती, उसके लिए मेरे को प्रोसेस नहीं करना पड़ता एनी मोर एवर. Mm-hmm. आई डोंट डू एनी प्रोसेस. सो बट इट डजंट मीन कि मैं मेरे को मेरे लिए रेलेवेंट है ये चीजें, तो इसका मतलब ये थोड़ी भी बाकी लोग करें तो वो बेवकूफ़ है या गलत है. हर एक उनकी उनको रेलेवेंट है, दैट्स फाइन. बिल्कुल. एक एक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो है, कह लो क्लासेस है. सो प्रोसेस फॉर है. दिस यू हैव दिस, फॉर दिस यू हैव दिस. राइट. सो फॉर दैट्स व्हाई मैं आपसे भी बात करता हूँ जब आई एम वेरी स्पेसिफिक. आई एम यहाँ पे भी आता हूँ तो वो बंदे, उनको ऑप्शन या वो आइडेंटिफाई हो गए जो इस पार्ट्स में किसी चीज के लिए काम नहीं करे. कोई पूछ को बनाने के लिए काम नहीं करा, कोई सूंड को बनाने के लिए काम नहीं करा. सो बट वो जो करें वो ठीक है. मैं अगर वो ओवरऑल पिक्चर में कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं तो मुबारक है. सो राइट. बट माई जॉब इज समथिंग टोटली डिफरेंट. सो और वट मैं यहाँ से देखता हूँ सोचता हूँ, तो वो होलसम की बात कर रहा हूँ मैं. बट या, राइट. so for me these things are irrelevant personally. But yeah, ओके. नो. and I आई. never feel like करनी, या नो. like I know आई saw that लोग मेरे mindfulness अराउंड जो रहते हैं ना, like वो हाँ. बोलते हैं कि like they feel or need like sometimes these stuff, even they know this is just a candy, but still okay, that's fine, I have no problem. But they said like you, we can't be like you, like you are totally different. और उनको वहां पे शायद मैं ड्राई भी लगता हूँ कभी, आई एम टू ड्राई और समथिंग, आई एम लाइक आई एम ए रोबोट. Yeah. But I do No. enjoy, I enjoy things, but I don't need to make an effort to enjoy things. Yeah, Anything. that's fine. Yeah, that's okay. That's how it is. No, I was just like I saw mindfulness और फिर मैं जानना चाहता था ना like कि Yeah. because. So mindfulness मेरे लिए तो जो इसका लिटरल मीनिंग है कि be, don't take bullshit when you are like looking at something, read between the lines, or yeah, be mindful, the actual mindful, not the any those meditation process, not those, the literal meaning of mind. Nothing to deal with the monkey mind, right? Yeah. So it is about when so मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूँ, है ना. तो Mm-hmm. मैं, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ जो मेरे को क्लैरिटी हुई है और उसका कभी भी कंट्रा नहीं हुआ, जो भी जो जो गुरसिक्की की फिलासफी है उसमें से. तो उसमें एक पंक्ति आती है, सतगुर जोगी जागते विच माया करन उदासी. अब सतगुर का मैंने आपसे बहुत बार जिक्र कर दिया. इट्स नॉट अबाउट सम गुरु और पर्सन और एनीथिंग. Yeah, इट्स got it. नॉट गुरु शब्द है ना. सो व्हेन आपको जो इटर्नल का जो एक्सपोज हुआ भेद है वो क्लियर हो गया, तो उसके साथ जुड़ गए हो आप. योगी मतलब जो जुड़ गया, योग हो गया You. जिसका. जब आप उससे जुड़ गए हो तो आपको कहीं बैठने की जरूरत नहीं है. आप माया में, संसार में, एनी सिचुएशन, न्यूयॉर्क में तो आपको ऐसे नहीं लग रहा अभी मैं यार जंगल में जाऊं, ये क्या है, पत्थर की बिल्डिंगें हैं. तो पत्थरों में जाओ तो ऐसे नहीं लग रहा यार शहर में लोग कर रहे हैं, मैं कहाँ उजाड़ में बैठा हूँ. बिल्कुल तो बिल्कुल. वो आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में रहते हुए और वहां पे जो भी आपका काम है अपना काम करते हुए उदासी में डिटैच रहते हैं, क्योंकि आप जुड़ कहीं और गए हैं और आप उसमें डिटैच रहते हुए कोयले की खान में से निकल भी आए और आपके ऊपर काला दाग भी नहीं लगा.
तो So आखिरी आखिरी की पंक्ति उदासीन, आखिरी की पंक्तियां क्या थी, आखिरी की लाइन क्या थी? विच माया कर्ण उदासी, जो सतगुर उदासीन, योगी ओके ओके जागते, ओके, गॉट वो गॉट जो गॉट। सतगुर से जुड़े हुए योगी हैं वो जागते हैं, वो मतलब माइंडफुल हैं, जागे हुए हैं, मतलब अंदर से वो हमेशा अलर्ट हैं। और वो माया के अंदर रहते हुए भी माया उन पे हावी नहीं होती, भी वो उदासीन नहीं माइंडफुल होते, हाँ इतनी है भी माया उनको ओवरटेक नहीं कर पाती। हाँ, बिल्कुल कर्ण बिल्कुल। उदासी, उदासी मतलब डिटैच्ड, हाँ, उदासीन होते हैं, हाँ उदास, हाँ, ठीक है, हाँ डिटैच्ड, हाँ हाँ। विच माया वो जागते भी वर्ड शब्द है, वो ऐसे जाग जाते हैं, ऐसे माइंडफुल हो जाते हैं कि माया में, इस मैट्रिक्स में रहते हुए भी हम्म, ये मैट्रिक्स उनको इसके ट्रैप नहीं कर पाता, वो इसमें रहते हुए भी डिटैच हम्म, रहते हैं, इसके ये ट्रैप नहीं कर पाता मैट्रिक्स उनको। yeah, yep, yep. No, I got it. Cool, cool, cool. Yeah, I think प्रिंस आए हैं, आप सर कुछ पूछना चाहेंगे आपसे? हाँ जी, प्रिंस जी आइए। हाँ जी भाजी बोलो। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸੇ 'ਚ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, करो कोई गलबात। ਔਰ ਰੂਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਓਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਯਾ ਸੋ वही बात होगी ना, मतलब कि व्हेन आई से ओ टेक द what word actually or any words literally say, so I know mostly these things are I am too technocrat I guess, so okay. So but yeah, so that's how I see the world, and people see different, like when I was kid, like मेरे को दुनिया नंबरों में दिखती थी काइंड ऑफ और लाइक नंबर्स एंड वेव्स और स्टफ, बट स्टिल yeah, so but I enjoy, एक और बात आई, like another thing, I whether I listen classical or any contemporary or anything, like even मैं गुरबानी भी सुन रहा हूँ और या कोई भी चीज जो है ना, तो मेरे को ऐसा नहीं है, कई लोग होता है ना, अरे यार ये क्लासिक, ये क्या आजकल क्या नया म्यूजिक आ गया, ये कैसे हो गया, नो मैटर व्हाट स्टाइल, व्हाट कोई किसी का अपना अपना है। सो वो मेरे को जो मेरा प्रोसेस है, जो मेरा वो तरीका है, जहाँ पे मैंने जुड़ना है, जहाँ पे करना है, वो मैं किसी भी एड को यूज कर लेता हूँ। तो मैं इसका ऐसे कहता होता हूँ कि जितना म्यूजिक है, या ये कविता है, या ये पहाड़ों में सैर करनी है, ये कुछ भी है, ये चीजें, दीज थिंग्स आर फ्यूल, द राग हो गया है ना, जहाँ पे वेव है, रागा है, दीज आर द फ्यूल ऑफ योर सुरती, योर अवेयरनेस। वो क्या राइट। करती हैं, वो आपकी अवेयरनेस को, आपकी सुरती को इग्नाइट कर देती हैं और उसको उसको फ्लो मोड में डाल देती हैं, वो एक फ्लोटिंग मोड में राइज हो जाती है, वो ऊपर को कहीं ना कहीं वेंडरिंग कर रही है, इधर उधर जा रही है ना, तो एक्टिवेट होगी और वो मूवमेंट में आ गई। बट द थिंग इज, वो जो मैंने पहले की थी, तो वो क्या होता है, फिर मूवमेंट में आ गई, तो आप कहीं पे बाग की सैर कर रहे, या आपकी गाड़ी में तेल डाल दिया, किसी भी एड से, म्यूजिक की एड से डाल लिया, किसी से डाल दिया, पर आपका कोई वो है नहीं भी गाड़ी लेके जी कहाँ जानी है, तो आप घूम फिर के आके अपना ब्रेक लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और आपका थोड़ा रीसेट हो जाता है माइंड, और यू आर बैक, और आपको ये पद्धति, या जैसे आपने बताए थे वो प्रोसेस या जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं कर लिया आपने दिलों को। सो माय होल पॉइंट इज, जो मैं जिस डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ उसमें है, ये एड फ्यूल आप कोई भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर, और फ्यूल के बिना भी गाड़ी चलती है बाद में, तो द होल पॉइंट इज, ये बड़ी फोकस्ड है, गाड़ी के जीपीएस में नाम कौन सा डालना है, पता कौन सा डालना है, और उसके जो गाइडलाइंस है ना, जैसे रोड रोड का बेसिकली वो फेंस करती है, और उसके साइन बोर्ड्स होते हैं, सो वो कीप ऑन ट्रैक। सो वो चीज जो है ना, आपने एक बार गाड़ी में जीपीएस में डाल दिया, तो नो मैटर हाउ यू डूइंग, आप यू डोंट वांट लॉस्ट, वो आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे। तो ये जो जिस प्रोसेस की मैं बात करता हूँ बाई स्टेट की, उसमें आप फर्स्ट यू पुट द द ओरिजिनल नेम, प्रिसाइज एड्रेस, लोकेशन, एंड
करेक्टरिस्टिक्स। सो मैं इसीलिए आइडेंटिटी शब्द बहुत यूज करता हूँ, है ना। सो नेम की बजाय मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है ना, वो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। हमारी अभी ह्यूमन काइंड की दिस टाइम राइट नाउ बेस्ट आइडेंटिटी है पासपोर्ट, है ना। तो पासपोर्ट में आपके बहुत सारे एलियस नेम होंगे। कोई आपको मोनू बुलाएगा, कोई कुछ बुलाएगा, दोस्त कुछ बुलाएंगे। जैसे लोगों ने कर्म नाम कृत्य नाम, कोई राम बुला रहा है, कोई अल्लाह बुला रहा है, ऐसे एलियस नाम रखे हुए हैं ना। सच। तो पर वहां पे आप वो नहीं चलेंगे, आपको ना आपका कहते हैं भी गिवन नेम, ओरिजिनल नेम, रियल नेम, फर्स्ट नेम जो आपका पहले ओरिजिनल, वो आपको डालना पड़ेगा, रियल नेम, ओरिजिनल नेम। फिर आपके बहुत सारे एड्रेस हो सकते हैं टेम्परेरी, पर फिर भी होता है वो एड्रेस डालो परमानेंट, नो मैटर वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड। आपको वहां पे चिट्ठी पहुंची तो कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट हो जाएगा भी, ये आपका लेटर मैसेज आया, आपकी कम्युनिकेशन जुड़ी रहेगी, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं परमानेंट एड्रेस। आजकल पता नहीं क्या बोलते होंगे, पहले मेरे को पता है ये लिखा होता था इंडिया में परमानेंट एड्रेस। तीसरी चीज होती प्राइमरी। है उसमें पहले आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो मेरे इक्वेशन में वो करेक्टरिस्टिक बन जाएंगे, पर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। तो उसमें पहले होता था अभी मेरे जी माथे पे कट लगा है या लात पे कट लगा है, मेरी एक उंगली 6 उंगलियां जो एक उंगली कटी हुई है ना, एंड देन यू पुट योर फिंगरप्रिंट्स। द होल पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट इज सो कोई फेक बंदा डिसीव करके ना निकल जाए आपके आपके नाम के नीचे और आपको धोखा दे दिया ना गेट से। यही पर्पज होता है पासपोर्ट का, द राइट फुल ओनर जो है इस आइडेंटिटी का वही निकले। सो और फिर हम फिंगरप्रिंट भी मैच हुए थे, फिर हमने इम्प्रूव किया, तो फिर अभी हम आईज का आइरिस स्कैन डाल देते हैं उसमें, है ना आजकल। तो मेरे को और इन्फॉर्मेशन आजकल मैग्नेटिक स्ट्रिप में है, आने वाले में अभी भी वो इतनी परफेक्ट नहीं है। सो मे बी आगे चल के बंदे का पूरा जेनेटिक कोड डालने तक पड़ेंगे शायद, है ना। तो होल पॉइंट इज आइडेंटिटी जितनी ज्यादा प्रिसाइज और फुल प्रूफ हो सके उतनी की जाए, है ना। सो कोई कोई झूठ नकली वो बन के ना निकल जाए। सो यही है अभी जब जो अपनी अवेयरनेस आपकी सुरती की जो मन जब फ्लोटिंग मोड में आए थे तो सुरती बन जाता, वो लाइक मूव करे एक कौन लाइक जैसे धूप बत्ती में से धुआं सा निकल रहा है तीखा सा, है ना, लाइक इस इन फ्लोटिंग मोड। सो वो तेल तो आपने डाल दिया म्यूजिक का या कहीं पे, पर अगर आपने उसको राइट टारगेट नहीं दिया, बहुत सारे केसेस में तो वो घूम फिर के ड्राइव करके आ जाएगा, तो कोई डेंजर नहीं है, आपने ब्रेक ली, बट सम टाइम वो रास्ते में कोई लुहावनी चीज लगी और बंदा वहां पे स्टक हो गया और फिर वहां पे ट्रैप हो गया। तो ये प्रोसेस है ना, अकेला फ्यूल लेके निकलने वाले, ये इसमें आप क्योंकि आप एक सीकर हो गया आपका माइंड, है ना, एक फ्लोट उसमें वो वनरेबल भी हो गया। वो जो आपको वो एंजॉय करने लग पड़े, आप मूवमेंट को एंजॉय करने लग पड़े, पी लग बड़ी एक एस्टेसी है, तो आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस या जो ये मैट्रिक्स है वो आपको कोई ना कोई विजुअलाइजेशन या कोई एक्सपीरियंस दे देता है कई बार उस सिचुएशन में, जब आप वनरेबल हो, फ्लोटिंग मोड में हो। तो वो एक्सपीरियंस वो बंदे फिर बहुत वो बड़ा आउट ऑफ द लगता है, तो बंदे कई बार ये होए थे जाओ दिस एक्सपीरियंस मस्ट बी समथिंग गॉड और डिवाइन और समथिंग मैसेज फॉर मी और समथिंग, एंड दे गेट। बट वो मोस्ट ऑफ टाइम जो इंचेंटमेंट मोस्टली ट्रैप क्रिएट करता है, क्योंकि ट्रैप ने ही आपको किसी तरफ से डेंजर दिखाना है, डराना है, और एक तरफ से लालच देना है। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में कई बार बंदे जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, कई कई तो बच जाते हैं, ओके एंजॉय किया आगे। देखो वो पहली वाली बात की थी ना हमने कि बहुत सारे लोग जो है इसमें लॉस फंस जाते हैं, वहीं पे आलू पोटैटो टमेटो में उसी में फंस या जाएंगे। सो इसका इसकी जो इसका कौन है जो वो ये होता है। तो इसीलिए सो मैं आगे तो कल परसों ही बात कर रहा था। तो बिफोर यू आपकी श्रद्धा या आपकी जो डिवोशन है या है ना, वो डालने से पहले जो जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, उसमें आप वो काम नहीं चलता। यू शुड ट्रस्ट, आप बिलीव करिए, विश्वास रखिए भगवान, जहाँ सत्य मिलेगा, जहाँ जो भी होगा, है ना, लोग बोलते हैं ना। तो इसमें है कि आप लॉन्गिंग में रहे, ओपन रहें, ठीक है इधर उधर जाएं, बट लाइक माइंडफुल रहें। अगर आपको नहीं लग रहा वहां पे कुछ है तो मूव ऑन, डोंट स्टक देयर, एंड आप थके मत। जब तक आपको
वर्दी नहीं मिलता डिवोट होने के लिए, तब तक आप अपनी जो यात्रा है, या भटकना कह लीजिए या जर्नी कह लीजिए, कोई शब्द है, उसको ऐसे ही काम चलाऊ, मतलब थक के और गिव अप मत करने दे। Appreciate, So man. That's a good thought. yeah, हाँ, and when you know like okay now I know, and उसको आप चारों तरफ से टनका लें, हर तरफ से उसको परख लें, हर एंगल से, हर नुक्ते से, हर साइड से, और अगर वो करके आपने देख लिया कि या इसका इसके मुकाबले में कुछ लग नहीं रहा, कुछ होगा इसका और सब्स्टिट्यूट, और मैंने सारी तरफ से देख लिया, अगर आप बाई चांस आपका अच्छा दिमाग भी अच्छा चलता है, आप ब्लेस्ड हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको लोग कहते हैं भी तू बंदा बहुत क्रिटिकल है और तू बड़े सही सोच समझ के फैसले लेता है, फिर भी करें, तो फिर आप उसको डिवोट हो। अगर फिर भी अगर आपको 5-10 साल बाद फिर लगे भी यार वो मैंने जिस तब मेरे को लगा था भी ये ठीक है, पर अभी मुझे लग रहा है भी ये भी अभी वो एक्चुअल चीज नहीं है, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, तो फिर सीकिंग मोड में आ जाए, एंड देन फिर आगे मूव हो जाए, होने के लिए ओपन कर दें अपने आप को, लॉन्गिंग में आ जाए। सो फिर आपकी डिवोशन है उसको रोक के, और क्योंकि अगर आप डिवोट हो गए तो आप मूव नहीं कर पाओगे कहीं पे रास्ते में। बिल्कुल। तो सो आपने ना शुरू में जब शुरू किया था ना, आपने इस टाइम आपने कुछ बोला कि डू यू हैव सिनेस्थेसिया? नहीं, वो क्या होता है मुझे पता नहीं, पर बताइए। आपने बोला ना कि मुझे मैं नंबर में सोचता हूँ, या कुछ ऐसा बोला आपने Yeah, कि नंबर yeah. दिख जाते हैं। In my when I was observing the world, and मैं एक ऑब्जर्वेशन में और एक वेंडिंग में था, तब हम्म, उस टाइम की बातें हैं, लाइक सो वन द होल थिंग इक्वेशन सॉल्व, देन आई डोंट हम्म। नॉट एनीमोर। नहीं, तो मुझे तो अभी भी आई कैन सिनेस्थेसिया है स्टिल सी एक्चुअली। इट लाइक दैट। अब मैं देख सकता हूँ, बट अब मैं उसमें उसमें गुम नहीं हूँ, अब मैं उसमें अचरज में या उसमें लॉस्ट नहीं हूँ। नहीं, इंटरेस्टिंग, सो सिनेस्थेसिया वो आपने अपने को यूज कीजिए उसको, वो अगर है ना, यूज कीजिए। वो एक वो तीसरी आंख है। नहीं, वो मैं राजी आपसे बात करता हूँ, वो एक टाइम मुझे भी लगता था, तो यू नो व्हाट व्हेन व्हाट आई वाज, सो मेरे को लगता था कि मैं ना लाइक जो कहते हैं ना भी जहाँ पे भी बंदा हाथ लगाता है गोल्ड बन जाता है, काइंड ऑफ लाइक मेरे को बहुत थोड़ी एफर्ट में जिस चीज के लिए लोग महीनों सालों एफर्ट करते थे, मुझे 1-2 दिन भी शायद लगते थे, है ना। एंड मैं जो भी काम करता था मैं बड़ा वेरी इजीली गुड। उसमें सक्सेसफुल हो जाता था। बट मैं एक टाइम था तो मैं सोचता था कि यार अभी ना मेरे को थोड़ा बहुत पता लग रहा था अभी दुनिया किस तरफ जा रही है या क्या है टेक्नोलॉजी या वट। सो चलो चलते हैं और फिर बहुत सारा इसमें आगे निकलते हैं, और जब बहुत सारा पैसा बनेगा फिर दुनिया की सेवा करेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाऊंगा या कुछ, है ना, गिव बैक करूंगा और ऐसी चीजें। तो और मेरे को अपॉर्चुनिटी थी, मेरे को मैं ज्यादा पर्सनल बातें नहीं करता, बट मेरे को मैंने कुछ काम भी ऐसे किए हैं जो मेरी को ना पढ़ाई थी ना फील्ड थी, बट वो इंडिया में अगर किए हैं तो इंडिया का फर्स्ट दैट काइंड ऑफ डिजाइन उस लेवल का उस स्केल का किया, या और कुछ किया है ना, ऐसे कई चीजें कहीं रिकॉर्ड वाली चीजें की लाइफ में, फिर वो की तो छोड़ दी, अब उससे आगे निकल गया, उसको किसी चीज को मेरा मैं टिक नहीं पाया, प्रोफेशन नहीं बना पाया। तो ऐसे ही इवन मैं बताऊं मेरे को, सो जो कंट्री की एक सबसे बड़ा एसेट होता है किसी कंट्री का, है ना, सो वो जो सर्विसेज होती हैं, दे ऑफर मी लाइक नो, टेल अस व्हाट यू वांट एंड यू जस्ट कंसल्ट इट। मैं क्या, लाइक मैं नौकरी मैंने तो कभी की नहीं यार, यू नो दैट आई कैन नॉट वर्क फॉर एनीवन, एंड दे सेड नो, यू विल हैव ए कंप्लीट लिबर्टी, you decide, you live, you will be a civilian, whatever you just, and it's not like you have a paid person and you can have anything, all accessibility, and then work for us, work with us. But I didn't settle for that, but I know I can use those things. So अब भी कई बार होता है भी, like अगर मैंने कहीं पे मार्केट की चीज देखी या कुछ, आई से दिस इज गोइंग टू हैपन बट आई नेवर इन्वेस्ट और समथिंग, है ना, वो मेरे आसपास वाले लोग बोलते हो तू बात कर रहा था वो हो गया, तो तू क्यों नहीं करता, बट I find something, I guess, more worthfully in my life, and I know these things. Even innovation की बात हुई, technology. I realize that if I won't do it, this is going to happen. Somebody will do these things anyways. It's somebody will fill this gap. The the thing
nobody like with the bigger जो problem है ना हमारी like that's what I write, the human problem. So this have no reward, like no. So but the, I, I ask for it and I am stuck for it. I am stuck now. So Actually, the human problems, okay, you don't solve it for reward, right? For yeah, the worldly reward, you don't solve it. Actually, you solve it because it's that's the what right thing to do. that's what. Yeah, exactly. It comes to you. Hmm. Well, that's a great thing. Yeah, it's interesting. Yeah, so like this is my so अब मेरे को लोग पूछते तो क्या करते हैं और मैं सच बोलता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे लाइक निकम्मा आदमी हूँ बिल्कुल बिल्कुल पता क्या होता है एक्चुअली ना जो जो एफर्ट्स होते हैं ना मतलब इवेंचुअली आपका माइंड जो होता है ना वो देखता है कहाँ लगाना है एफर्ट, राइट? तो जैसे अभी आपने बोला कि यार ये इनोवेशन मुझे करनी चाहिए, कोई और कर ही लेगा इसको, राइट? तो लाइफ टाइम ऑप्टिमाइज करता है हर बंदा कि यार मेरे एफर्ट यहाँ और पे वो ज्यादा हो रही हो। है और मैं आपको बताऊं वो चीजें जो जितना मेरे को जो देर आर मल्टीपल फ्यूचर टाइमलाइंस है ना, मैं देखी और देख सकता हूँ और आगे जो जिस तरफ जा रहे हैं बहुत ये श्रिंक डाउन हो रही है और लेस फॉरगिविंग और इवेंचुअली नो फॉरगिविंग होगी. सो अभी भी बहुत सारी ऑप्शंस है, इट कैन गो इन एनी वेज, बट राइट नाउ मोस्ट ऑफ स्टफ दे आल्सो इन दैट डायरेक्शन, उसको भी ऐड कर सकती हैं जो फ्यूचर टाइमलाइन की तरफ मैं काम कर रहा हूँ, बट वो किसी और फ्यूचर टाइमलाइन पे भी जा सकती हैं और कैटास्ट्रॉफी की तरफ भी ले जा सकती हैं. बट राइट नाउ मोस्ट थिंग्स जो बट आई थॉट एंड सम पीपल आई somehow in my talk I don't say I help them. They already have something maybe, but they talk with me and they said it helped them somehow. एंड जो बड़ी ब्रेक थ्रू हुई हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं. आई डोंट दैट्स द होल पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो वन ऑफ द एजेंडा है उसमें से नॉन पर्सनल से निकलने के लिए, इसलिए मैं अपना या किसी का नाम मेंशन करने वाली गेम मैं तो पूछता भी नहीं हूँ किसी का नाम ज़्यादातर, ना अपना बताता. 15 साल तो मैं अनोनिमस ही रहा. गुड गुड गुड. तो 4-5 साल हुए हैं बिकॉज आई एम doing something at the root level or something kind of, so then I have to expose myself, either तो मैं अपनी आईडी से आ रहा हूँ. राइट परफेक्ट. नो that's good to know. Always good to know. So ऐसे ही है और ऐसा नहीं है भी like you do something, आप लाइफ में थोड़े से काम करते हैं और वो एक एक काम आपका कहीं पे शायद मे बी आपका कोई 15 मिनट का डिस्कशन होता है, दैट्स इट विद इन एंड दैट 15 मिनट और लाइक वन फ्यू लाइंस is big enough if it helps, and it helps sometimes to very like groundbreaking or disruptive total direction or new thing. So yeah, so That's right. वो moments होती हैं, अर्न करनी पड़ती हैं. Like it's a so investment. It yeah, goes and it comes. so yeah, ऐसी हैं तो like there are like there were a few there was the still is a very big theory of astrophysics. It's considered as the big one of the main or major. So उसमें theory में like I didn't initiate, but then eventually I have to after many years, and then थोड़ा बहुत मेरा चलो like discussion हुआ, and then because वो बहुत block करी थी सारा system, and then that person have to just add one extra word in that his theory, that boundaryless. एंड उससे जो है जो बहुत सारे लोग उसको बहुत मान रहे थे, लाइक इट्स काइंड ऑफ डिवाइन रेवलेशन और समथिंग, बहुत बहुत अटैच थे. सो वो जो उससे बहुत फर्क पड़ता है ना, कई चीज़ें होती हैं आप लिख देते हैं कीवर्ड पर, अगर बहुत सारे बंदे उसके फैन फॉलोअर हैं वो कई बार ब्लॉकेज भी क्रिएट कर देती है चीज़. सो ऐसी छोटी छोटी बातें, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं. We need that. आई होप That's good to know, right? Like these things are important, right? Purpose होना चाहिए. It's always good that
you know, the one one is able to resolve key मेरी priorities क्या Hmm. है, right? Yeah. And not indulge in something temporary. Yeah. तो बाकी ये- जैसे म्यूजिक है, पोम है, these all writers, poets and stuff, musicians and all other arts, craft, they are very important, but they are aids. अगर yeah, हाँ, they are not primary. If we make them primary, then it's like that vulnerable being vulnerable. yeah. So before, in the past, mostly they were kind of primary. Mm-hmm. The future is they can be a fuel, they नहीं can नहीं, be ये aid. actually even past will be ना. I'll tell you one thing. See the हाँ, ये जो tools है, this is a tool only, right? yeah, Some people know how to repair an engine, right? And that's what it yeah, is. Nothing more than that. लेकिन yeah, जो जो प्राइमरी चीज है ना, वो व्हीकल को ले जाना कहाँ पे है, राइट? वो गाड़ी जानी कहाँ पे है? uh-huh, तो जो पास में भी जो रहे हैं ना, जिन्होंने लाइक दे वर लकी इनफ कि उनको पता था कहाँ जा रहे हैं वो, एंड uh-huh, दिस टूल आल्सो ऑफ लैंग्वेज और व्हाटएवर आर्ट, दे वर uh-huh. एबल टू मैच्योर इट, दे वर लाइक दे एंड वर गिफ्टेड. दैट्स व्हाई मैं कहता तो मैं उनको डिसरिगार्ड नहीं करता, या या डिसमिस नहीं करता. दे हैव देयर पार्ट. वो एक लेवल तक लेके आए हैं. उस लेवल तक आने में कुछ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, पर वी कैन से ये जो है, कौन सा या डैमेज होता है वो डैमेज मान लो. बट द या थिंग इज लाइक ज्यादा, बट देन अगेन आफ्टर दैट इट्स सपोज टू बी मूव एंड मूव टूवर्ड्स सो मोर. व्हेन यू आपकी एम्बिग्यूटी उस वहां पे पहुंचना है जहाँ पे कंप्लीटली कोहेरेंट हो जाए और टोटली एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए. So abhi you like the next move before the next level, I see now we need to come to that humankind. If it's getting so tight, so much या less options एग्जैक्टली. to stay on the right track. या So सी दी ओनली थिंग इज, इन लोगों का जो काम है ना, जो पास का काम है, सी हाँ, मतलब मैं आई आई अज्यूम दैट क्लैरिटी कि पास्ट में सारा कुछ पास्ट में नहीं हुआ है, राइट? हाँ. But I also assume that in this continuous path, we are They lucky that definitely are part of the process. yeah, they are part of the process. Because अभी ना कुछ दिन पहले जैसे मैंने, this is my, because of poetry, my interest is, is getting deeper in Sanskrit poetry, and मैं पूरा पढ़ रहा हूँ वो सब चीजें, कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है ना एक्स्ट्रा अपने टाइम उसके Hmm. अलावा मैं करता हूँ. तो देयर इज अ टेक्स्ट, वो शंकराचार्य ने लिखा है, विवेक चूड़ामणि, Hmm. और आई एम ट्राइंग टू डाइजेस्ट इट. और मेरा ये कि मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ संस्कृत में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृत में पढ़ूँ उसको. और उसके Hmm. बाद ना, सो दैट आई आई रीड हिज माइंड, आई एम ट्राइंग टू रीड कि वो इतना कंडेंस कैसे लिख पाता था. Hmm. और वो सही गलत वो सब चीजें तो हाँ, डिबेटेबल I होती mean, हैं, कुछ कुछ पार्ट किसी को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, राइट? हाँ, हाँ, बट हाँ. वो जो जो पीस है ना, आप वो जो वर्क है Hmm. वो इट गिव्स द डिसिप्लिन ऑफ वर्क एथिक्स की उस, मतलब वो थिंक अबाउट, दैट्स द पर्सन हु नोज कि इंजन रिपेयर कैसे होना है, राइट? सो ही इज द बेस्ट रिपेयरर. एट द Hmm. सेम टाइम ही हैज अ डायरेक्शन, मुझे ये Hmm. करना है, राइट? और मेरा मेरा बिगेस्ट पर्पस ये है, जस्ट रिपेयर करना नहीं है. तो Hmm. वो जो जो शब्द जो है ना, वो उसके पास वही टूल थे. तो Hmm. वो वो जो है ना, वो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, दोस थिंग्स जस्ट फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव. मैं जो करता हूँ जिन बच्चों के साथ में यहाँ पे कि आप विवेक चूड़ामणि पढ़ो, राइट? और वो Hmm. उनको दे चकल, राइट? इट्स अ डीप वन, एवरी कट, like it's a philosophy, right? Why would somebody read that if you Hmm. don't have that kind of time, right? But it gives, विवेक चूड़ामणि में लाइक वो फंडामेंटली ना आपको कहीं पे बैठाता है, वो आपको ना, आपको रूट करता है कि यार बैठो यहाँ पे, इट्स नॉट माई थॉट, राइट? इट्स योर थॉट. हाँ, बैठो हाँ. वहां पे और No, स्टार्ट like करो. when I was in like kind of when I explore, I thought I will figure out that time when I used to think or something. हम्म, उस टाइम पे like I do like मैं ये चीजें, but I don't have a memory, even very short memory, so मेरे को हम्म, याद नहीं कुछ नाम वगैरह कुछ भी. But I know I did this, and I didn't find something that for me. I'm not saying everybody to rest ओके. or like to do resting place. हम्म. Ashtavakra or ये सारा कुछ. So but yeah, इष्टावक्र the गीता thing या. is, हाँ. हाँ. So अष्टावक्र गीता और भी बहुत सारी चीजें और वो उनकी तो लिस्ट. डायरेक्ट है, वो तो बहुत डायरेक्ट हाँ, है. हाँ, माय गॉड. हाँ. So yeah, so they were they have their own goals and stuff. या. They might be relevant to this word around that time, and I know that's what I am saying. They were a part of the process behind, somewhere in the middle, so somewhere where there, but that part is.
done, and then again and the जब आपका उस लोकल लेवल पे कुछ हो जाता है तो देन द पिक्चर बिकम ए बिगर, आपका राइट चैलेंज बड़ा, आपके पास अब फील्ड बड़ी हो जाती है, और बड़ी राइट हो राइट जाती है। राइट। किसी टाइम पे जो प्रॉफिट और जो भी आते रहे हैं बुद्धा वगैरह, वो कहते थे मैं इस क्लैन के लिए आया हूँ, फिर मैं इस राइट नेशन के लिए आया हूँ, दूसरा कहता था मैं मल्टी नेशन के लिए आया हूँ, पर स्टिल ऑन द प्लेनेट अर्थ डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए आया हूँ। सो राइट अभी फिर उसके बाद ग्लोबल हो गया, फिर अभी हमारा यूनिवर्सल। सो जो उसका फील्ड बड़ा होता है वो राइट। अलग बात है। आज भी जो लोग वहां पे जुड़े हैं वो क्या है, किसी ने बात किया अपने कुटुंब छोटे परिवार की या अपनी फॉलोअर्स की, हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं यूनिवर्सल। अभी जो इस्लाम वाला है वो बोलेगा अभी जो सेवन स्काइस है इट्स अबाउट सेवन गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज यस। है। फिर हमारे पास क्लस्टर आ गए, वो बोलेगा नहीं इट्स अबाउट क्लस्टर। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्स, सो दोस थिंग्स वर एक्चुअली अबाउट द सेवन वर्स मल्टीवर्स। सो राइट राइट। वो कुछ लोग होते हैं वो उसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए अपनी इंटरप्रिटेशन रिफॉर्म करते रहते हैं। एक होती है कि वो आपको रिगार्डलेस ऑफ इन चीजों पे, नो मैटर हाउ बिग और छोटा हो, वो चीज उसमें काम भी करती है और रिगार्डलेस उसका भी एग्जिस्ट करती है। राइट तो राइट। वो है। सो वो तो है ही है। वो दे वर रेलेवेंट इन सम टाइम सम प्लेस। सो most like except one to that clarity, rest all everything else। मैं ये यूज बड़ा करता हूँ वर्ड रिलेटिविटी और रिलेटिव, है ना। सो दे आर रिलेटिव टू सम टाइम और सम प्लेस। बच्चों वाली एग्जांपल है उस पर बड़ी बड़ी है। मैं कहता हूँ क्या होता है अभी कई बार ना, कोई देर वाज सम काइंड ऑफ लॉ और कोई ऐसे कोड और धर्मा कोड था या किसी टाइम पे, वो आज से 1000-2000 साल पहले उसको बहुत अच्छा और पवित्र और सही माना जाता था, और जो वो काम करता था आज की डेट में लोग बोलेंगे हाउ कैन बी देयर पीपल सो बार्बरिक, और वो इतना कैसे कह सकते थे, है ना। आज वो इवल हो गया। बिल्कुल। वो तो समय से हो गया। एक है कि आज समा सेम चल रहा है, एक कंट्री में एक स्टोरी है जो एक चीज अच्छी मानी जा रही है और दूसरी कंट्री में सेम टाइम में उसको बैड माना जा रहा है, उस लॉ को और समथिंग को, है ना। तो ऐसे जो स्टोरीज और लॉज होते हैं ये टाइम और देश के हिसाब से रेलेवेंट इनकी बदलती राइट राइट। रहती है। सो एंड दे आर एंड टेम्परेरी मोमेंट्री। एक और चीज है इसमें ना, एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि ये जो जो दीज माइंड्स, राइट, दे दिस दिस स्पार्क्स दे केम एट डिफरेंट टाइम। ऐसा नहीं था कि उनके जो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे ना, वो लोग भी उनको ढंग से समझ पाए, राइट। सो लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ थॉट्स दैट दे हैड वाज नॉट प्रॉपर्ली ट्रांसमिटेड एक्चुअली। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक वी ऑल हैव इनर्शिया ऑफ द पास्ट, राइट। कुछ ना कुछ ऐसा बैकग्राउंड हमारा होता है जो हमारे साथ चिपका रहता है। और जैसे 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 पानी होते हैं उसमें से गुजरते हैं ना, वो कार वॉश करने वाली टनल से गुजरते हैं, तो कुछ ना कुछ झुल जाता है, कुछ चिपका रह जाता है। वो तो मैं उसके लिए दूसरा कहता हूँ भी शेडो रह जाती है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, वो नहीं जाता ना। और वो तो तो वो जो जैसे ना, ये इसी टेक्स्ट में ना एक जगह था, एक दूसरा ना शंकरा का दूसरा जो पढ़ रहा था मैं, वो हाँ आई थिंक 6 महीने पहले पढ़ा था मैंने। उसमें है हाँ वो मनीषा पंचकम। हाँ और वो मनीषा पंचकम में वो बंदा, मतलब उस एपिसोड को मैंने दोनों से सुना एक्चुअली, जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स भी है ना, जो हार्डकोर शंकरा के फॉलोवर्स हैं और जो उसको अपोज करते हैं किसी फॉर्म में, वो उस इंसिडेंट को मेरे को लगता है वो ढंग से समझ में नहीं आया कि उसका रिविलेशन जो था ना, उसमें जो लिखा है उसने मनीषा पंचकम में, वो बेसिकली उसने चंडाल देखा और उसके बाद उसने बोला उसको चंडाल से, उसका रिएक्शन क्या था, और उसके फॉलोवर का उसके बाद सदियों तक कैसा रिएक्शन रहा, और उन्होंने कैसे लिया उस सारे एपिसोड को ना। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वो बंदा, उसको पढ़ोगे ना बिना किसी फिल्टर के, तो आप देखोगे कि वो एक्चुअली बोल रहा है कि यार ये जो 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 वो है ना, परमार्थिका की बात कर रहा है वो, कि आई सा वो शिवा इज इंसिडेंटल बट ही सा दैट दैट वननेस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो वो अब उन लोगों को कुछ और नजर आया, जो जो बाकी थे ना, उन्होंने बोला कि उन्हें इसने ये बोला है, लेकिन व्यवहारिका में स्टिल आप जंजाल क्यों कुत्ता खाता है, तो ये सब चीजें वो सब रहता है, राइट। वो सब चीजें रहती है, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड दैट, यार वो ये बोल रहा है, राइट। तो वो जो आप बोल रहे थे ना, कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि दे सेड समथिंग एंड देन with the new discovery people tend to appropriate it, right, कि वो ये तो उसने बोला ही हुआ है यार, इसमें इंक्लूडेड है ये। तो वो बेसिकली उनका अपना अज्ञान होता है ना, कि आप जो भी नया है उसको पुराने में घुसेड़ दो, तो वो मतलब आपको
आपको कोई मतलब फेक कॉन्फिडेंस देता है कि पास में कुछ ऐसा हुआ था, राइट, बट ना तो आपने वो किया ना आपने ये नया किया है, आपने किया। और ये वननेस का जो है ना, लाइक इट्स नॉट आई एम गेस, इट्स अ पार्ट ऑफ होल इक्वेशन, बट जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें वननेस जो है ना, वननेस में जो पैराडॉक्स नहीं खत्म होता, आप इंडिविजुअल का और सोसाइटी का और यस। कम्युनिटी। सो वो मे भी हमने बात की होगी, सो मैं कहता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन जिसमें मुझे उसमें मोनोथीज्म, ओमनिज्म, लाइक वन इज काइंड ऑफ ओमनिज्म, एंड पेंथीज्म, पेनथीम्स, और भी जितनी अभी, लाइक आई डोंट हैव टू डिसमिस एनी ऑफ देम, दे डू एग्जिस्ट एट सम लेयर, समवेयर समवेयर समवेयर, बट उसमें से भी फिर वो जो पैराडॉक्स, दैट्स व्हाई मैं वर्ड यूज करता हूँ डेफिनाइट, प्रिसाइज, आइडेंटिटी, like pinpoint, है ना, you can kind of with your mind you can touch it with the finger of, with your finger of your mind you can touch it, you can precisely see clear what is and what is just a tamasha, but you are part of it, it doesn't राइट। mean play must go on, but what is real. So वो oneness में वो जो paradox have that back door, through oneness it still grab people, and sometimes people feel like a grant or like a control or obliged to do something to create a oneness or something, and then that sense of doership and then sense of control, it can also create that sense of control and doership if you stuck only up to the oneness. Yeah, and the paradox, when I said oneness, right, I was just giving one example, right? Like, Uh-huh. as we talked earlier, right? I don't think there is, there is a complete solution anywhere, at any point of time, Okay, I because understand. that's my, But, that's what uh, we disagree, right? All the no, time. yeah, I won't Yeah, say right. it's your limit again. No, 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 no. You can say that, right? And I wish that could be the only limit I have, right? I have so many limits, right? so, so, so the point is, when I see, the thing is this, right? The paradox comes when the awareness is not there. So, like, people were seeing sun, right? वो नीचे, यहाँ से नीचे जाता है, वहां से ऊपर आ जाता है. तो जब तक उनको Hmm. पता नहीं था कि इसका मैकेनिक्स क्या है, उनको नहीं पता था, राइट? तो वो Hmm. पैराडॉक्स ही था कि यार ये क्या हो रहा है. अभी भी जो है ये बोल रहे हैं कि लाइक पीपल टॉक अबाउट इन साइंस, राइट, कि जो ब्लैक होल के जस्ट व्हेन स्टार्ट हो रहा है ब्लैक होल, तो क्या होगा वहां पे, Hmm. रियलिटी की वो, व्हाट विल हैपन, राइट, दैट Hmm. टाइप, बिकॉज फिजिक्स इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट. Hmm. सो वो भी पैराडॉक्स ही वहां पे, जिस तरह का बिहेवियर होता है ना, या पास में जाके आपने किसी को मार दिया, अपने 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 किसी फोर फादर को मार दिया पास में जाके, तो क्या होगा, Hmm. टाइम Hmm. ट्रेवल का ये ना, ये प्रॉब्लम उनका. Yeah. तो ऑल I दिस know. पैराडॉक्स. So I so that, because then that thing never happened. So it was supposed to be in a linear anyways. But anyways, yeah, Yeah, no, I I know. mean, this is This, just like, yeah. the point is, till we don't find the answer, so these things, they all are Hmm. paradox, right? The point we Hmm. find the answer, there is going to be a next paradox. So completeness हो गई Again, तो, like and I think you have the it's not completeness. for you, like Uh, because it's a replay on. So I need to make very clear here. yeah, Even this infinite or endless or something. So I said the deception or the matrix is infinite. It have a multi-layered, more complex, और पैराडॉक्स उसी में क्रिएट होते हैं, लाइक आई एम नॉट सेइंग जस्ट, दैट्स व्हाट आई यूज वन लाइक लाइन बिफोर, है ना, मैंने उसको mm, एक्सप्लेन किया था. uh-huh, सो दिस इज आवर एक्सप्लोरेशन व्हेन वी लिव हियर. uh-huh, सो इसमें एक्सप्लोर तो करना ही, आगे करेंगे करेंगे, इसमें चेंज होएगा. But what I'm talking about, which is very finite, doesn't mean like it's a very close boundary line. right, right. Finite means very stable, like fixed word. That what I'm talking about. That is not. I'm talking about these things. These things, it's ever changing. आपके अगर कुछ ऐसा हो गया तो आपकी होल प्रेडिक्शन और समथिंग जिस लाइन में जा रही है वो लाइन चेंज हो जाएगी, उसमें से ब्रांच हो जाएगी, ब्रांच होके बैक चले जाके Mm, पिछली किसी ब्रांच से भी जुड़ सकती है ना. ये जो mm, ब्रांचेस हैं, ये ट्री की लगा लो कंटिन्यूम एंड विद mm, इनफिनिट रिग्रेशन. तो उसमें mm, वो चीजें हर तरफ जुड़ सकती हैं, किसी भी तरीके बैक भी जा सकते, बैक गियर भी लग सकता है, आगे भी आ सकता है, एक पैरेलल में mm. भी चल सकती है. मैं जब कहता हूँ क्लैरिटी द कंप्लीट फ्लॉलेस आंसर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द दिस कॉस्मोस.
and is inside it. Mhm. The processes of all different combinations and separations and all this Right. Right. structure. I'm not talking about that. This is at the end. It's all virtual. At the end, it's all wave filled. We feel like a matter. It's just a wave in that like very what to say, complex structure. It come together and it appear as right now we already produce a matter out of a vacuum now. Before we have to use another thing with the gravitational force, and there was a theory, and I guess we did already, or maybe we are very near to produce a matter without any input from vacuum with the gravitational force. Yeah. So like that's what I'm saying. Like when I see this whole physical thing or material three-dimensional world we see, it's basically just a different combination and structures of the wave field, but they perceive as a real. They are just a hologram. Like we create a hologram, but we can touch them, we can interact them, we can create reactions out of them. So Yes. like that double slit experiment. So it's same thing. Once it's a particle and it's also wave. When there is an observer, it become a particle. When there is no observer, it's a wave, and it's create the wavelength on the board बिल्कुल where. So ये so uh, ये जो बंदा है ना जिसने those things what I say, people are going to do that regardless, because this is the like this plays happening on a conveyor belt. So when what I am pointing towards is it is everywhere in that, but it is not about that only. right So that's why I said it's not just oneness. I'm right talking about something. Okay, oneness only happen in a kind of structure when there is a like there is any kind of cosmos or septial space. When there is a septial space, then there is oneness. Oneness is a unity or synchronization or singularity of multiple finite things in like in synchronization in one direction or in unity. I'm talking about in that possibility when there is nothing to unite. In that thing, what is that precise, which is still relevant, which is still existent, and मैं द क्लैरिटी में उसकी क्लैरिटी की बात करता होता हूँ. वो वननेस उससे सेपरेट नहीं है. वननेस है तब तो वननेस उससे सेपरेट हो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इलॉजिकल. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वननेस जब होती है, वननेस की गुंजाइश बनती है. लाइक व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल टू बी हैव समथिंग, देयर इज समथिंग टू बी इन ए वननेस. वो जब होती है तब तो है ही है. जब वो पोटेंशियल वो प्रोजेक्शन ही नहीं हुई जिसमें वननेस हो, तभी जो है उस सत्य की बात मैं कर रहा होता हूँ. जब चेतना नहीं है, जब शिवोम नहीं है, जब लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, जब किसी तरह की वेव नहीं है, कुछ भी नहीं है. So that base I talk about, I'm pointing towards mostly. That base is so need to, when that base gets very clear. So आप अपने आप को बिजी रखने के लिए यहाँ पे किसी कोई किला नहीं बनाते, बड़ा परमानेंट किला नहीं बनाते. फिर मैंने तो इसके लिए काम करना है, मैंने समाज में ये ऐसा समाज बना देना है, मैंने ऐसा देश बनाना है, मैंने ये जो डेंजर हजारों सालों से हमारे ऊपर आता जाता है, बार बार हमला करता है, मैंने एक बार इसको खत्म कर देना है, मैंने वो कर देना है. तो इस तरह के लोकल किले नहीं बनाते हम, उस पर सारी लाइफ स्पेंड नहीं कर देते, और वहीं right तो right वो चलते रहते हैं. But they are secondary things. They are exactly something pragmatic. I said those are applications, and but they are so yeah. जब आप दो चीजें आपने बोली राइट रिसेंटली एक था आपने and those things are reconciling right जैसे when I talked about कि सत्य तो वही खोज रहा है Elon Musk, right? So you said no, that's not right, which reconcile with what you said today, right? So there is a reconciliation between thought in terms of uh, Mm.
but one thing that again maps to maybe you are not you are in a different place. बट वो जो जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ब्रह्म और माया के प्ले में, राइट, सत्य और ब्रह्म और माया के प्ले में जो है ना वो उसमें वो उस बेस को वही बोल रहे हो आप। आपका बेस डिफरेंट कैसे है उससे ना, वो सेम ही है नहीं, बेसिकली। ब्रह्म तो वननेस की बात है ना। ना ना ब्रह्म ना 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 नहीं ना नहीं, देखिए राज जी, जहां नहीं, चलो आप अपनी हाँ, डेफिनेशन दें तो आज मेरे को मुझे। मेरा तो आप बोल रहे हैं कि देर इज ओनली वन ईश्वर और ट्रुथ, और वो ब्रह्म ही वो अलोन ओनली। आप नहीं बोल रहे, अदर पीपल बोलते हैं। हाँ सो ठीक है आज ठीक मैं है, हाँ आपकी मतलब आपकी मैं, स्टेटमेंट दीजिए। हाँ मेरा मेरा टेम्पोरल टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ब्रह्म जो है ना हम्म वो उसमें 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 पेड़ ना तो गिरता है ना पेड़ को कोई देखता है। माया में पेड़ गिरता भी है और पेड़ को देखा भी जाता ठीक है। है ना। लेकिन हम्म माया जो है ना ये ब्रह्म से और ब्रह्म में वापस चली जाती है ना। जो ब्रह्म ज्ञानी जो होता है उसको दोनों चीजों का पता होता है कि यार आपको, नहीं, हाँ, तो हाँ, मेरी बात मैं कंप्लीट वही कंप्लीट बात करने कर रहा दीजिए, राइट। हूँ। नाउ चल करिए करिए। माया जो है ना, माया तो ये है, ये अद्वैत का फंडामेंटल अद्वैत है, राइट। जो जो द्वैत वाले हैं ना वो बोलते हैं यार कि पेड़ गिरना चाहिए और किसी को देखना भी चाहिए। कोई अगर कोई जंगल में नाचा है तो आपको वो एंजॉय करना जरूरी बनता है। अगर आप इसी में हो तो बहुत सूखा हो जाएगा नहीं तो, कि ब्रह्म और माया। तो ये दो चीजें फाउंडेशनल हैं जो कि ना, कि बेसिकली ब्रह्म में चीजें कन्वर्ज होती हैं, जहाँ पे कि आप इट्स 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 जो जो सतगुर है ना, गुर नॉट गुरु, सतगुर वो है, वो मैं देख रहा ओके, हूँ सो उसको। आई एम कमिंग दैट, आई नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक डिस्क्रिप्शन है, एक प्रोपोजिशन है कि दिस ऐसा हो, इससे परे है ना। सो वेयर दिस हैपन, वेयर थिंग्स अपीयर एंड डिसअपीयर, है ना। उसको वो उसकी आइडेंटिफाई नहीं, उसको आपने एक टैग दे दिया, जैसे ब्रह्म, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, है ना। किसी ने कोई और नाम दे दिया। इससे एम्बिगिटी खत्म नहीं हुई। आपने एक प्रोपोजिशन रखी, इन दिस प्रोपोजिशन, लाइक एट दैट लेवल एंड दिस, है ना। और वो उसमें भी कुछ अराइज हो रहा है, कुछ उसमें डिसअपियर हो रहा है, पर कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ पे डिसअपियर हो रहा है। वैसे तो वट एवर आई रीड मोस्टली, व्हेन वी टेक होल टेक्स्ट scriptures, those they mostly go around about the this chetana, chaitanya, brahman, shivoham and all kind of stuff, शिवोहम। बट चलो, मैंने आपकी इंटरप्रिटेशन, रिफॉर्म इंटरप्रिटेशन भी ले लेता हूँ, वो उसमें प्रिसीजन नहीं है ना कोई। अब ब्रह्म दे दिया, अब ब्रह्म में तो एक और एम्बिगिटी, एक और इसका मिसयूज इतना बड़ा है। ब्रह्म कह दिया, ब्राह्मण कह दिया। अभी आप कह रहे वो नहीं है। हाउ कैन यू से कि कुछ लोगों ने जब लिखा, वो बेसिकली खुद को भी ब्राह्मण कह दिया उन्होंने, और वो अपनी बात करे अभी मैं ही हूं वो, है। अहम ब्रह्मस्मि, आई एम दैट तत्वमसि, आई एम दैट आई एम, लाइक कोई आंसर नहीं दिया। तो वो हमने आज कहना जिक्र कर दिया भी, ये जो हम जिस बात कर रहे हैं अभी इस कॉस्मोस के पीछे, वो उसकी बात कर रहे हैं। बट इस शब्द के मल्टीपल यूज है और मल्टीपल मीनिंग है, और इसमें से वो एम्बिगिटी नहीं खत्म हो रही। how can you dismiss this proposition? They are talking about themselves, that Brahman is like, यहाँ पे बात करते हैं अभी, उसके ऊपर मंत्र देवता है, देवता के ऊपर मंत्र है, उसके ऊपर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण एक कम्युनिटी ने भी अपना नाम रखा हुआ है। सो इसमें एम्बिग्यूटी नहीं ना खत्म हुई। इट कैन बी टेकन एज एनीथिंग, और नहीं वो कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। और उसको लाइक बंदा कहने लग पड़े, मैं ना जाति हूँ, ना शरीर हूँ, ना ये हूँ, ना वो हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो शिव हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं ये हूँ, है ना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ समथिंग हायर हूँ इससे, है ना, मेरी हायर सेल्फ। सो उस हायर सेल्फ को, जो उसकी जो आपकी फीलिंग और सीट आपने ले ली है, और फिर भी आप दुनिया में घूम रहे हो, लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे हो, आप कुछ करवा रहे हो, किसी के अगेंस्ट जा रहा है, किसी के फेवर में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके अंदर हाउ कैन यू डिसमिस, इट्स नॉट द एक्सट्रीम ऑफ द ईगो, एंड दैट ईगो कम फ्रॉम द बैक डोर एज अ गॉड और एज द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड taking the higher seat, and dodging you to also that you, it's not you are egoless, but it's something else. And I am that, so I'm not ego, I'm that. So
you cannot dismiss those possibilities either here. Yeah, I mean, That ego, you think I am get rid of ego, and your ego with the new face come from back door from top and pretending to be higher self. मेरे साथ बहुत होता है। अब तो मैं ज्यादा नहीं, शुरुआत में यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट रूप में कई बार जाता था ना, सम टाइम मैं वहाँ पे इनपुट देता था थोड़ी थोड़ी। right. तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे को बोलना, यू नो व्हाट, वो दे टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल पीपल्स, oh you have a very high frequencies. And I tell them, you know what, all my effort, if I do any effort, is to make sure that I don't have any frequencies. Right. See, I want ये to be जो है ना, frequency less. हाँ, And sometime there was a lady, he said, you know what, you are also on the seventh heaven. I said, no, I'm not. She said, you don't know. I know, I'm also there, and you are on the seventh heaven. I said, this direction I dismissed long ago. How can you dismiss the 70th heaven and 7 billionth heaven, eh? So, like यहाँ पे कई बार अपने शक, एक बार मेरे को किसी ने वो जो बड़ा कंफ्यूजन है यार, अगर तुम्हें ये नहीं समझ आई इस दौर में, किसी ने बता रही यहाँ पे बैकुंठ भी नीचे है, इसके ऊपर ये है, फिर गोलोक है, फिर वो है, और वो कोई वन ऑफ द बिगेस्ट सीट ऑफ लाइक है ना, तो वहां पे बैठा बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा बात कर रहा है. सो लाइक that's why I talk about many times, like that is another delusive trap. वो मैं जहां से देखता हूँ, मुझे वो ट्रैप, मैं उसको बहुत बड़ा माया तंत्र देखता हूँ उसको. नहीं, माया तो वही ना, माया तो ये सब जो है ना, जो think I of mean, this. let's consider as a totally dry academic और community की तरफ से बात करते हैं ना. Sure. एकेडमिक लाइक साइकोलॉजिस्ट की तरफ से बात करते हैं, वो बोलेंगे भी भैया ये सब कुछ नहीं होता, तो आपको वो लाइक सम टाइम यू नो सम पीपल कम विद सम, वो कोई इवन टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी कोई इनोवेशन लाए, कोई थ्योरी लाए है ना, कोई पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी, कोई वो बंदा कहता है कि ये मेरे को, मैं नहीं फिक्र, आइडिया आया मेरे को एकदम, और आई डोंट थिंक हाउ इट अपीयर टू मी, एंड देन आई से, अब साइकोलॉजी बोलेगी भी वो एक्चुअली बंदे का ना अपना आईक्यू बहुत बड़ा था, वो क्योंकि ऐसे लोग बहुत हम्बल होते हैं और वो कभी भी क्रेडिट नहीं देते, इसलिए वो कह देते हैं इट्स नॉट, इट्स जस्ट अपीयर टू मी और समथिंग लाइक दैट, है ना, वो उनकी बात है. इन माई केस फॉर पर्सनली आई नो फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग, सो आई हैव नो डाउट कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि ये कैसे या कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है ना. बट अगर मेरे साथ if I talk to the people like just a very dry academic people and discuss this thing on a table, if I sometime if I choose to, I will say, okay, just take it as a concept, take that divine or add that element out of it. You think for me it may be there, but for you it's not there. Even at a concept level, bring something equivalent to it, or something, and which is applicable to all and accessible to all. वो शंकराचार्य वाली बात है, दूसरों को फील नहीं हो रही, और एवरीबडी इज इन दैट, वो सभी दुनिया, बाकी की दुनिया हीन भावना में आके अब वो उनके लिए शंकराचार्य नहीं, ऐसा नहीं हीन भावना का नहीं है. सी देखिए, वो ना जो विवेक चूड़ामणि में ना उसने बहुत सुंदर बात की उन्होंने. वो बोलते हैं कि भाई जो आपका जो ईगो है ना, ईगो के बारे में बहुत अच्छा बोला है कि इट्स जो होता है ना रिकर्सिव लॉजिक, वो है ये. आपको ईगो का नहीं होना ही बताने के लिए आपको व्यक्त होना पड़ेगा, और जहां पे आप व्यक्त हो गए ना, जहां पे एक्सप्रेस कर लिया आपने, तो उसमें ओनरशिप आ जाती है. जहां पे ओनरशिप आ गया, वो ओनर आ गया, तो ईगो आ गया. सो दैट्स देखिए राज जी, वही तो बात मैं कह रहा हूँ. ओके, सो इन माय इक्वेशन आई डोंट नीड टू टेक आइदर अद्वैत और अद्वैत, उनमें बोथ प्रोपोजिशन वो भी एग्जिस्ट करती है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक इट आई डोंट नीड टू डिसमिस मोनोथीज्म, आई डोंट डिसमिस ऑल दिस थिंग्स, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वहां पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, दो धाराएं भी नहीं है. दूसरी बात जो व्यक्त की बात है ना, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो ईगो मैंने पहले एक दो बार डिफाइन किया है. सो इन दैट आई डोंट टेक माई सेल्फ आउट ऑफ पिक्चर, but I'm a minion here. I create a relation. But you are there. And in this, but you are there, right? See, I am here. I multiple time I said that nonsense. I don't talk about that now. I'm not this body or something. I accept fully right now. नहीं, आप नहीं कह रहे.
मैं बता रहा हूँ राइट नाउ इन करंट सिचुएशन एंड पोजीशन राइट नाउ आई एम इनसिग्निफिकेंट एंड आई एम वेरी लिमिटेड माई सेल्फ वट आई कैन डू हियर है ना, वो मेरी लिमिट्स हैं। बट मैंने एक रिलेशन क्रिएट किया है और जहां पे मैंने रिलेशन क्रिएट किया वो लिमिटेड नहीं है। सो वो रिलेशन में क्या है कि इस आई एम नॉट आई डोंट हैव टू, मैं अगर मैं किसी और को डालता हूं तो मैं उसको अपने साथ नहीं जोड़ूंगा, मैं उसको भी सीधा जोड़ दूंगा। हाँ, वी कैन वर्क टुगेदर। वो हो सकता है भी किसी का कोई स्किल सेट है, कोई सुपरवाइजर बन गया, कोई कॉरपोरेशन का कोई कुछ बन गया, कोई फील्ड पे बन गया, कोई उस मैनेजर बन गया, बट दे आर एम्प्लॉयज है ना, उनमें से कोई ओनर नहीं है। They are all working together and they all are same level. They have just different responsibilities. But the thing is, in this structure, so if I get out of picture, it don't affect. और मेरा कुछ कहा सुना भी, like I don't need any story or write poems or anything about it. It is so precise. मैंने आपको पहले बताया पिन पॉइंट हो गया, एंड देर इज नथिंग, देर कोई मोड अवस्था, नथिंग लेफ्ट देयर। इट्स अ डायरेक्ट बाई स्टेट रिलेशन, इंस्टेंट रिलेशन। So उसके अंदर I don't have to write books and novels and a lot of literature about it. It's so I said it's the world's most simple, short, coherent, or total or flawless and straight and crystal clear idea, concept, or thought. Anyone can, if somebody have this much sense that if that somebody is in like a mental hospital or something, but that person know if that person is hungry, he can do show finger or something, I need a food, that bread. If any person have that level of little bit understanding, aware, it apply it, that person can take same benefit from it. So So नहीं वहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, राइट? जब जो आप जो उस प्रिसाइज चीज की बात कर रहे हैं ना, गुड थिंग इज यू आर कंसिस्टेंट अबाउट इट, राइट? सो यू आर टॉकिंग अबाउट a point which is there, right? But उस तक पहुंचने के लिए, right, it's basically whatever miniature you are, whatever big you are, you are playing a no, part in that. nature I become after I that thing appeared to me. उससे पहले मैं I don't know why what I was. वो Exactly, yeah. पहले में nature minion नहीं है आप. Like, Yeah, yeah, then yeah. So once relation is created, then yeah, exactly, yeah. So now the point is, but you still exist, right? yeah, I don't dismiss. I am a virtue, Good. but right now, like, I guess I'm going to repeat it. Like I will use exactly same example. Like we create a very advanced simulated game or word, and the people have inside, the characters have a very precise AI like human or even better. Mm-hmm. For us, it's a simulation, but for those characters, it's a real world. Yes. For them, that's a real world. Mm-hmm. Like this बिल्कुल. world is current reality of us. For them, it is. Mm-hmm. So Yeah. same thing for me. But I am not stuck and I am not wondering, but this is my current situation and position. So Right. I can connect, I Mm-hmm. can make my mind as a Mm-hmm. that fiber optics channel. Like, why I am using fiber optics right now, that's the more interruption less so channel we have, like less interruption, most fast. And then the port, when you connect with the port, the hub, the Mm-hmm. actual hub, Mm-hmm. so from side there is no disruption or interruption or anything, and you get you send the clear input and you get the clear Mm-hmm. output, and then you see it as on a monitor or on a printer. So you apply it or you act or you say it. So Yeah. my local processing is out of the picture. So the thing is, the difference is, it's like I don't know now. In old time, client computer in Indian railway station or anywhere, they Mm-hmm. don't do any process. The Mm-hmm. server hub is somewhere else. They just send the input, need Mm-hmm. this many tickets. The hub Yeah. tell, oh, it's available, the out, and they print it, or they Yeah. so on. So the no more local processing. The local system is only querying the situation, sending it to that base, and then Mm. according to it, whatever that scale or that, Yeah. and then according to that, whatever it comes, saying it or projecting out or acting or making it in action. Okay. So आपका मॉडल, या तो And ये that server is
non-personal. So it is not bound to me. It is not mine or my higher self or anything. Basically, a whole point is for me, I want to be my most lowest self here. Right. But there is a single point of failure, right? That one point is single point of failure. If your theory is wrong, And it's not right? point, but I use point because I Yeah, don't call or use it as, because point can be anywhere. We can find anywhere, any intersection there is a point, but it doesn't mean there might not be any more point behind or around yeah, it or in parallel it. So right. point, some people do use say point and use even for meditation. Point I don't, because point, you might have something already, your proposition or your already goal, and you make that point and you focus at that. So point have no personality, direction, or no fixation. So Hmm. you can call anything point. So Right. point is So, again very ambiguous and it can mislead people. so But would I you? use point because Right. I am not I'm just beating around right now. राइट नहीं बट वो उस पॉइंट को आप बोल रहे हैं कि वो वहां पे जाया भी जा सकता है और आया भी जा सकता है राइट ये आप बोल रहे हैं वहां पे yeah, you can make an instant connection with it. कनेक्शन ओके वो जो कबीर ने The बोला था port, ना like कि that those we have a hubs, there are ports, you connect your fiber or राइट any राइट cable on those ports. राइट सो जो So कबीर ऊपर जी की port, बात थी ना कबीर जी की वाणी थी उसमें हाँ ना कि जहां कोई आए ना जाए मैं लास्ट टाइम ही कोट किया था राइट हाँ तो वो हाँ। नहीं है आप जिस पॉइंट की बात करें वहां पे जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं करेक्ट नहीं, वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं. यू कैन गो इन, यू कैन कनेक्ट इट, यू डोंट गो इनसाइड द हब, यू कनेक्ट विद इट. अच्छा आप ओके जाएंगे तो स्पेस आ गई. हाँ बट आप बाहर हैं उसके और कनेक्शन है राइट चाहे कैसा भी कर सकते हैं हाँ. तार जुड़ी हुई है आप इस क्लब की ना, जो मेरी डिस्क्रिप्शन है, आई नो आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, दैट्स स्टिल फाइन ट्राई टू मेक सम सेंस एंड रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट आई सेड देयर. हम्म जो क्लब की ठीक है मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी ठीक हुई है है. नहीं गुड I'll try to read that yeah no it's interesting you know yeah no I think मेरा मेरा जो है ना मेरा जो my take is that it's highly decentralized right मैं still you know I still can digest the Brahm piece right हाँ. and जो जितने मॉडल्स होते हैं ना मैं I can map जो ब्रह्म और माया के प्ले में ना I can map it तो Yeah. for my uh, understanding the I don't know about you, but I see most people, Mhm. they use that. They talk about, they can copy or say anything, oh this is written, this is written, but they have very high, like, but still their goals and the force they make, nationalism, heritage, sanskriti, this my folk, my parents, this is our traditions and stuff. Same Yeah thing with Shankaracharya. Okay, I can say, we can say people make this story, he never did those things, but the stories are popular. But what he did on a ground level, so there are, like, it's not like everybody was happy, all community was happy about it and things. So नहीं वो तो that ambiguity, that paradox still left to create a, on ground level, many type of sectarian. And anyways, the Advait and Dvaiti, they also already have a very like, what happened. They always, one person writes something about one aspect, one school, Dvait, uh-huh. and then the other write about the Advait, and then another so it's back and forth. So yeah वो it देखो किसी भी didn't solve the problem. yeah and वो you know वो वही बात है कि it's always good that you know somebody comes and claims that I have solved the problem this Yeah, complete picture like right Christians can say, can use same description that that's what Christ is. yeah and you So know trust do me you it's think not like that's a see promise? the Now मेरा the जो thing framework है is, it's मेरा still जो framework having है that attachment to the language and one yes territory or localization. yes So when we use Brahm Shabd, of uh-huh. course, it's a localization of East language and No stuff. so this is Christ, you know, here's a beautiful thing I'll tell you you know uh, you there is a guy called Sam Harris is a you know is a great thinker of oh our no, no, time no, that's rare case. Somebody read or go in no no India, no 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 spend many no time, or like no 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 people no no people stick to people borrow different culture, language, No, words no, and it's not. stuff. It's That's not all. that. It's not. He's Okay, not go even ahead. telling that. He's not telling that that's what it is. But if you see his discourses, right? He's not. He's not like he has a guru in India and he came here. It's not like that, right? He's discarding that. He's saying, I you know, I went there, I did meditation and all those things. But the word he's talking about, his understanding of word is exactly same of Brahman Maya. The words are different.
Now, words are Yeah. basically captive. We all are captive of our language, right? So sometime, even though we are talking about a higher concept, we don't give the impression of unification because our words are from different culture, right? That's Yeah, one unfortunate thing. that's my whole point. These are alias words, pointer words. These Yes. pointer words, and what they point, we don't have the original real identity, the word, like this logos. Okay, so I know we have, even in our past, in each side, there is a mention. People sometimes talk about the Akshar Brahm. Now they put in it's something lower Mm, level, but it wasn't lower level. It's the same thing in the West. Jews, even before Jews, the logos. People said, you know what? Whatever it is, if we don't have a logos or something, we can't. What we connected? What we're talking about? What precisely? We cannot have a rest our mind somewhere. The wandering won't go away. So then logos, and it happens sometimes. Some people fill with some kind of mythical or any kind of god, and then they discuss and they said, and then sometimes they come to conclusion, oh, we can't touch it or say anything. The moment as anybody say anything about it, it's kind of evil or something. This also a situation, timelines happen, then people, nobody is considered as a bad if anybody say anything about. And then again, and then they created the Paul, he considered, and then they fill that god of gaps, the gap with the, oh, that logos, the is the flesh, and the flesh is a Jesus. So it's like, but we know it's see, not, it's see, actually, nonsense. yeah, and It's not, I know for many people it's a sensible, but right, when right, you see overall, so it's also creating a class and people depending on a mediator, another person. So people flash is different than that flash. So logos is logos. Logos, you बिल्कुल can बिल्कुल, believe it's a flash is a logos, but logo is not a flash. Flash is yeah, something different. Flash is very exactly, limited. The logos we were looking or seeking can't be limited राइट राइट राइट. and तो temporal. वो जो लोगों का है ना, लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन है या वो सब चीजें, वो तो मतलब बहुत टेम्पोरल चीजें हो गई. Hmm. लेकिन ये जो जो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीस कॉन्सेप्ट, राइट, these Hmm. are these concepts where we when we talk with people, right, not us, right, in Hmm. general, when you talk to people, you will connect with some people who have that common understanding, either whether the Oh, I person is, understand. है ना, so you A connect lot of with, people love Sufi. Lot of people love Bulla Shad. He is a Kafi. Bulla ki jana main kaun, yeah, yeah, is me this or not a this, because this sync with the most people current situation, wandering and lostness and like yeah, that wandering. So that most people, what movies or songs get popular which talk about people current mindset. correct. Hmm. Yeah, So yeah, so big fan following, and it's working for a lot of people. So people think, oh, you know what? I'm not alone. This is a very popular poet or somebody. He is yeah, yeah, also in same situation like me. He's talking hmm, same stuff. He is also stuck like me. yeah, So it's not I am something very right, insignificant or small or something. I'm lost alone. right, So right, it gives that comfort zone consolation. Okay, like if the people are so popular, people are in same situation, so it's okay. It's normal. Then I don't need to worry about myself right, much. right, right, yeah, yeah, no, yep, Yeah, like there is some people say it's not Rumi. So here in Turkmenistan or somewhere, because I enjoy all kind of music. I told hmm, you all kind hmm, of, even if they are dancing music, Darwish and all. hmm, So they were singing in their own local language, and I translated it, and they were in the name of Rumi. So because the Sufis have problem, when they investigate, and many things don't make sense in the traditional or centralized religion, hmm, but they were given an option. You know what? Either give us the answer, or hmm, if you can't give us a precise answer, hmm, so at least we have something. Whether it makes sense or no, we have answers. So you right, right, better centralize yourself there, or we will take you out of the picture. out of picture, So yeah, yeah, yeah. So either you give us a precise answer or you don't say. So then they have to say, you know what, whatever. So there is that person was a perfect person, but hmm, the ruler said,
we don't care what you preach or what you say, how Mhm. many questions you put, as long as you put your authority, you give the authority what we give, we are Mhm. good enough. That's good enough for us. You just need to say Jesus, and then you can preach anything Yeah. totally against the doctrine. We are fine with that. So with there, they were kind of actually so sad poem Mhm. where he's saying, don't worry, I don't want to involve in your politics. Don't worry, I don't want to interrupt anything you doing or kings Mhm. you doing or something. Like, don't see us as a threat. We are not threat. Let us live and do what Mhm. we want to do. Mhm. We just want, we are enjoying our movement and something. But in that, it's there is a big insecurity in that poem. They're trying to tell, oh, no, no, you don't need to worry about us. We are not danger or fear for whatever your aspirations or anything. You keep doing what you're doing. We are Mhm. just hiding behind somewhere here. And like, so that fear and regret and like a safety and defense mode. So, but it worked for many people. A lot of people enjoy those poems and stuff. I understand that. Yeah. It doesn't mean that it's not working for many people. Don't giving many people questions that, you know what, if you have a questions, and don't be so blunt, keep in your Yeah, mind, I mean, otherwise it might be danger for so you. एग्जैक्टली सो वो जो है ना लाइक जो सूफी एक एक बहुत सी थॉट आई थी सूफी में ना अनहल हक की जो Hmm. मंसूर करके आया था एक सूफी था Yeah, I मंसूर know. करके राइट एंड द गाय वाज एक्चुअली बुचर्ड We spent so much time when he was is getting go ahead. Yeah. या सो द गाय वाज बुचर्ड राइट सो Mm-hmm. ये जो बुचड़िंग है फिजिकल है राइट बट ये लॉजिकल बुचड़िंग भी होती है मतलब Mm-hmm. ये सेम कॉन्सेप्ट है कि समथिंग कम्स विद सो मच ऑफ रेडिकल आइडियाज and that it's a very rare phenomenon. I'll tell you the parallel, right? Mm-hmm. And that's why sometime I feel safe in America and not Mm-hmm. somewhere else because the people around here are of slightly evolved. I Mm-hmm. can say that, right? So I can feel safe. Mm-hmm. There was a guy, so he also after going through what these radical people they come after reading a lot, right? And they discard it, Mm-hmm. right? And when they discard it, They have the actually, you know what? They have their own justification that time with Sufis, and they said, you know what? They said, okay, then what is the answer? Tell us. Because to rule, we need to serve something to public. And when they said, oh, we can't beyond it, we can't say it, we can't expose its experience, its anubhava or something, it is unsayable. So they said, you know what? Then stay shut up because we have something. correct, Whether correct. for you it's not good enough, most people it is good enough. So Yeah, we yeah. See, have something to serve people. So either I think, you give authority to I that. think I'm not Those talking. those rulers, like carrier, I can say aspirants, they have their different aspirations. The Yeah, rulers, yeah, the yeah. See, politicians. the point is, So they find their own excuse for that. या सो वो जो है ना ये एक वन ऑफ केस है माया का जिसमें कि रूलर्स आर डिसाइडिंग द फिलॉसफी राइट Hmm. एंड द Yeah. फिलॉसफी इज नॉट कंपैटिबल विद द वे they want to rule or govern the system, that Hmm. small ecosystem. They are Hmm. taking you away. This guy, Anhal one was one of the guy, right? Now you Yeah. see, think Even of the even I don't know. wait, Like, let me okay, finish go ahead. Go ahead. before I forget. There is a guy called Nagarjuna. Yeah. Nagarjuna was a horned Brahmin in traditions, in reading, he was a scholar who actually evolved in that ecosystem. And when you live such a disciplined life, as you were also pointing out earlier, that at times the faculty of innovations are compromised. In his case, he left and he got into Buddhism, and he Mahayana was started by this guy. Right. Now, whether Mayan is right or wrong, I'm not saying that, but I'm saying the capability to jump, start a new thing, जो start करने की जो क्षमता होती है ना, वो एक ecosystem में तभी हो सकती है when you are safe and secure and people are intellectually compatible. They won't annihilate you. They don't kill you for your thought. That's the kind of that's where you have
like if in America, so many startups are there. You come out with a radical idea and people fund you. This is Yeah. one. This is the same thing, right? And this is what, like, you know what I'm talking. Let's talk about. I know, like, all these ideas, like, right now, here people can talk about all Upanishada stuff, Advaita here, but listen to me carefully. Their own profile. Okay, I'm not talking about layman. They listen these theories and they just repeating it, but they still stuck in a lot of rituals and everything. The people who kind of lead these things on these days, even them, the personal life is totally opposite. They are still stuck, which they in their lectures they call it irrelevant, but in their personal life they still feel like, oh, they have to do that. So this is bring the hypocrisy. And let's talk a different thing. In even in a Shankaracharya time, one movement gets so strong, which other movement, which most people say, even Hindu, some Shankaracharya fans says it's similar to the Buddhism. It's a lot of commonality. And Mm-hmm. give me a sec. Somebody's here on my. So, but the thing is, that other thing, which is not much different, pretty, it's just a different vocabulary or stuff. They feel like danger or prosecutor. They have to move forward. Okay, we can deny this history part, but there is a lot of we find the evidence that this happened there. So it's not that. And another thing, and it was so strong in like 800 years ago, 1000 years ago or something. And when even we call Mughals, but you know, even in the Mughal time, when this whole one big network happened, Kabir and all, this is things which are also against Mughals, mullahs, and Wandis, and they have a space that time to say those things, even in the Mughal rules. Mughal have other things. They said, you know what? Oh, most of their stuff is the local stuff, and we have a different agenda, so it's in our favor. They stay quiet, but sometimes it go against them, and but I guess they see for us it's not much dangerous because we already have a very less population. So so if Kabir is being balanced and he is calling all the nonsense on both sides in Hinduism and Islam. For Mughals, there is already very less Muslim. So if there is a reduction, very less reduction will happen. Hindus have big, so they stay quiet. I'm just justifying maybe, but still, no matter what justification they have, they allow it. Before them, it was only one way or no way. That happen in India multiple times, and then there is a scope. Then the population, the revolt, and India was so much like small states, so people have option. They can jump from one state to other. Namdev, Hmm. he had to leave Maharashtra, and he spent his rest of the life in Punjab, North Punjab, in Gurdaspur district. So, and a lot of people, you know, like in Punjab, we people call, there is a biggest population of so-called Hindu system, SC are there. Hmm. Most of them actually move in that time. They are mostly Marathi people. Their features and everything is Marathi. But they move that time when the Namdev and all this in the 15th century. So they have to move here, and they find safe space here. Mhm. So yeah, so it we can we see in comparison in Mughal times, this is if Mughal time don't happen, maybe it's a different history and different future. And then we don't have this option of moving forward, breaking the boundaries and going far superseding those existing norms and whatever school of thoughts. Right. So that's the play of world. Yeah. Well, I think this is so I totally reconcile with that idea, right? That the you'll have rulers who'll kind of let
certain things happen, right? Some people have more tighter control than the loser, right? Some people have little more kind of thing. Uh, the the point I was saying that, see in this spectrum of people, right, who came at different point of time, uh, we were lucky that they were given enough time to basically assert their idea, and we not to be agreeing with the 100% of their idea, right? But we need to have the discerning eye where we can grade their idea. For example, there are very few people who like Einstein, right? You need couple of 100 years to produce another one. So similarly, there are a lot of people who are of that kind. Nature just does not churn them. It might be producing, but everybody is not able to complete the work that they could have completed. So I think we are just lucky, in that way that people are there. When I was other day I was telling you, right, this guy's work is phenomenal, and this Yeah. yeah, Okay. So let's go. Yeah, I know. Like I used to say, like you know what? We were big papa. We in India, some people, no matter where they born in some privileged family where they have option or something, like, but otherwise every community have a IQ potential people. Some don't yeah, get the opportunity. So so what I'm saying, so we able to come to the base 10, this number system, all those things. yeah, But the thing is, those things, those innovations, instead of were used for right things, they were like, oh, these days झोला छाप वो कोई थोड़ी सी चीज निकलती है steroid, they make it into astrology, numerology, instead of making it in a better something. So those innovations become a livelihood of some people. They created a pseudoscience out of right. them, and because mathematics create a magic, like so they create a pseudosciences and they get misused, and it change the whole direction. So otherwise it could have become evolve in the right direction, and we might be like totally leading the east. It doesn't, for me it doesn't matter, Yeah, yeah, as long as it's happen anywhere in humanity on planet earth. I'm It's same good for me. yeah, and I But agree with. yeah, so but there, like the whole this start what innovation started, it get hijacked and turn into jyotish, astronomy, numerology, and whatnot, tantra, this and that, and No, 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 no. There, this there I no, whatever the no, pastors. no, no. I don't agree with that. I don't believe in Okay, Jyotish. yeah, I know there is a PhD of Jyotish Vidya in India अरे now in अरे नहीं university. नहीं I'm नहीं fine. I know. अरे बाबा किसी को काम तो दोगे यार, काम काम तो करेंगे ना लोग. नहीं, काम तो करना है, काम करने के चक्कर में वो जो मेन चीज है वो कई बार पीछे रह जाती है ना नहीं वो लोगों की. actually, the beauty of, see, that's where the beauty of mathematical development is, because they need those big numbers, and those numbers, even though they were kind of hunting, fooling people, right, that you have, and I cannot say with full mouth that they were fooling, right, but Yeah. जो But predictions जो whatever थे ना, yeah, so नहीं they नहीं were यार, appropriating or using it, like, but the thing is, anyways, no, let me tell you. So what happened? So that number system hmm, used by the Arabic merchants, hmm, and they make it a better use out of it, and then it go to the Europe and they turn into totally beautiful thing. Now we have, yes, it could be so happen in India. So the even merchants, they use it for trading, but it helped them, and that is it's Indo-Arabic number system, we call it hmm, nowadays. hmm, hmm. Yeah, So I'll tell but the you, thing is, well, I uh, have a very good example, very recent example, right? See, it's good that the technology traveled to the place where it was developed into a better thing. yeah. There's a recent phenomena which is very recent, in our lifetime. Mm-hmm. This whole computer science piece Mm-hmm. is developed here, right, in the Western world. Uh-huh. Okay, and it took 50, 60 years to develop, Uh-huh. right? But there are a lot of innovation now. It's traveling back to India and China, and a lot of innovations are happening there. Oh no, I know. And Yeah. they are, the rupee piece, rupee, that RUPI. Mm-hmm. That's a huge innovation in terms of the volume of transaction. Visa or Mastercard, the backend technology cannot do that. What they can do it.
And that is not, they have done the Delta piece. But these people, they were struck because they are tied with the Visa and MasterCard. They cannot get out of Yeah, it. Same anywhere thing when is the here. situation, any innovation happen, people invest so much money in the businesses, so they're Ah, saturated. Because if they have to move, they need to redo things. So exactly. they investment, they want to take the return from investment and this stop the innovation. And the other Absolutely. place where they haven't invested yet, so they invest when they invest after 10 years. Of course, they will invest in the Yeah. later. Yeah. Latest innovation, so they will be ahead, and then it's back and forth. Yeah, I understand. Yeah. See, इंडिया में जो फोन का ट्रांसफर ये ना ये स्मार्टफोन कितने हो गए हैं Mhm. आज Ah, तो everybody 10 have a two or three phones there टू at थ्री least. फोन ये नंबर राइट तो वो कहाँ वो क्या हो रहा है उसमें वो क्या मतलब वो कुछ ना कुछ तड़ी कुछ तो करेंगे ना उसका वो Data crunch. इत, Yeah, I know. इतने सारे लोगों को कुछ मिलेगा तो कुछ ना कुछ नया होगा ही होगा राइट सो Uh-huh. ये है कि इनोवेशन शुड ट्रैवल अभी क्या था उस टाइम पे स्केल बहुत स्लो था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी अब बड़ा फास्ट हो गया यू कैन सी दैट ओ माय गॉड दे इन्वेंटेड एंड दे आर लेवरेजिंग इट But now राइट you know what? Now this is because first of all, India get very costly, so their BPOs are not that cheaper anymore. So now actually the whole companies they are moving towards Vietnam, Philippines, and all अरे नहीं those. यार अरे बॉस वो वहां पे मैं आपको मालूम है वो 100 से नहीं ऊपर नहीं वो है वहां पे कोई यूनिकॉर्न इनोवेशन नहीं है क्योंकि इंडिया को आई गेस इंडिया ग्रो ओवर इट इज सो इंडिया इज नॉट रिलाइंग ऑन द कॉल सेंटर एनी मोर बिकॉज या इनोवेशन you या said या but now that part is moving there and now so it's spreading everywhere I mean या I नो know दैट्स these companies like I know where they are moving their call centers right now. So Philippines is a big center right now या for outsourcing. या Singapore was always, but Singapore is not just a labor job राइट market. They are totally different, the capitals, but करेक्ट the finance. But this Malaysia, Vietnam, and all those, it's now the companies are moving their BPOs there नो या सी to make या money. एंड दैट्स द नेचर ऑफ दैट्स द नेचर ऑफ नॉलेज राइट जहाँ पे वो वहीं जाएगी जहाँ पे उसका यूज होगा राइट नॉट Or बिल्कुल बिल्कुल it's also right now comparatively cheaper than India there. यस फ्यू थिंग्स आर चीपर डेफिनेटली यप तो इंडिया में भी थोड़ा ज्यादा दिन तक थोड़ा रहेगा अभी जो यंग जो है ना पॉपुलेशन वो कितने दिन Uh-huh. तक रही हो तो ओल्ड हो जाएगी 50 साल में ना राइट 20 साल में 25 साल में No, एवरेज बढ़ जाएगी India, 28 साल है India में क्या है ना like you okay, I am going to finish. China don't have much natural resources like Canada, America. Even the people don't do anything much there. There's so many natural resources they can easily sustain like with a good life. So what China did, China they have a little bit lithium and a few stuff. So they have only one natural resource is the population. So they put them in the right, and they were honest. India is not India population, but India to keep them busy, they coming with a very stupid idea to keep the people busy. So India till now I don't see they are क्या क्या using their what population is their idea to keep the people busy or like anything politics this and that what not anything no nationalism or this and that what everything everything else than what it should be. नहीं वो actually so these these companies these Mhm. unicorns Mhm. they are you don't see I know those most like Raj, you are okay. You know what? You uh, live in a US. Here, companies, the company who do trade, who like do grain trading or anything, they have very less margin. They don't make a lot of money. Innovators, okay, Elon Musk, this Microsoft, or those people, of course. In India, who is making the most money? Like, how can somebody become a fifth richest person by trading, by bringing a coal, by managing the ports and this, and by managing the petrochemicals, import and export? Like trading and management services in the US, North America, they make minimum money the most, uh, but India is opposite. It's not that the people who making the spread who becoming a multi-billionaire due to some innovation.
Mm. They're just packaging. What the Ambanis did, they just bring the synthetic, these toothpaste tubes from outside, the Mm. synthetic clothes. They put a nail. Vimal, they have a conflict, so we know the story how they dissolve the existing company or whatever, like a lot of Yeah, things. yeah. But the thing is, they just processing things, trading things, and if people making so much money in trading, something's wrong in system terribly. No, actually, I'll tell you. I'll explain you, right, and see if it makes sense. See, right now, those front runners, they are just like riding on the tidal wave. No, Okay, Raj, it. before one more thing, let me add. Mm, Here in America, this technology company, most of their revenue is from other countries because their product is everywhere. In India, these trading companies were mostly importing and selling to Indians. So they are collecting money from Indians, most of it. correct. So they are making people more poor, and they like No, accumulating tons of money, yeah, नहीं mostly नहीं from Indians, mostly नहीं from नहीं India. नहीं नहीं वो तो थ्योरी गलत हो गई ना फिर क्या अगर आप ये बोल रहे हैं कि दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम इंडिया दैट्स मनी एक्चुअली मनी कम्स फ्रॉम द मनी थ्योरी इज इट कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर एंड Yeah, कंज्यूमर को यू consumer is from outside, from the नहीं other नहीं 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 countries, or from your own country. That make अरे नहीं difference. अमेरिका इसलिए थोड़ा रिच था अमेरिका इसलिए रिच नहीं था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कि इट्स बिकॉज इट्स एबल टू सेल इट्स थिंग्स आउटसाइड it was rich because it is still able to sell the way American consume. I wish everybody should understand that kind of consumption. They have abundance. But they created that, and that's what is happening there. आप उनका just compare this the pattern of cell phone usage. How fast they are throwing on the cell phone now. You go talk to any person. I have four phones in last 2 years. So who created that consumption and who is supporting that consumption? Somebody is paying that, right? Who's paying? The same cell phone guy is paying in some way. तो ऐसा नहीं है कि ये it's a economic phenomena which is happening there, and the key thing is जापान में नहीं हो रहा है ये अब जापान में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको Look at Japan. Japan was exporting things. Now South Korea is नहीं नहीं exporting. नहीं अब Taiwan जापान exporting. जापान की इकोनॉमी नीचे क्यों जा रही है ये बताओ मुझे पहले तो export कम होगी. नहीं Who buy the Sony TV? नहीं नहीं उनके There अपने was बंदे one time that Sony was a staple. अरे नहीं नहीं Now नहीं नहीं people, नहीं नहीं there are नहीं other नहीं नहीं options. नो नो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या हो रहा है वहां पे कि बंदे नहीं है खाने वाले बंदे नहीं है Oh, जो that's खाने one का thing. Of course, there is a one balance of the population. If you go too down या and too many, वही हो रहा है वहां पे that's one thing. That's just one thing. Other thing is, Japan is working on the robotics. They might come up with a lead that maybe and may again come back to their foot, or they might ये not, वो because ये so right now what products they had before, those products are better products. Other countries are making those same products like cars and Kia and all those Hyundai and all. So Toyota, there was mostly it was Toyota is basically their royal family या नहीं अब thing. उनको जो one thing what is happening in Japan also like here Mm, we know that right universities में Indians आ गए researchers right mm. Japan में भी because बंदे हैं नहीं right अब And वो another thing, Japan, because people have the money and it's very small country, a lot of their cream moved to America, anyways, yeah for bigger house, bigger land, bigger like open. yeah but Japan का जो है ना like उनका work ethics वही है उनका culture उनका national वो सब अच्छा Yeah, है लेकिन बंदे नहीं उनके पास वो they have इसलिए bande. Those bande, whatever those bandes are doing, it might disrupt and just suddenly grow very fast. Mostly they are in the games and like the next word, the yeah metaverse, yeah the yeah yeah so simulation उनका word. So yeah it is so in very early stages. It's not making any no, money right now. If they lead their thing, they might come back. I'll tell you how they create consumption right and this is a phenomenal about them Oh, उनके Raj, I had to go. It's late, and I am what keep getting calls for dinner. So that's fine no worry I think I just had while talking to you so it's okay yeah
I think that's let's touch base sometime. This is the long discussion, right? Can Uh, keep on going. Yeah, I appreciate. I but enjoy talking to you, Sam. okay, Mm. I guess you just kill my time. But I'm not interested in these talks personally. But yeah, it's fine. It's good. Yeah. That's very blunt, very raw. Sorry. Yeah. No. 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 I know. But the thing is, uh, these talks are happening everywhere. All rooms, Facebook, no matter what forum, local big parties, everywhere. Uh, I told you, I left this territory long ago. I aware what's happening because everything is affecting like a whole thing. But yeah, like ठीक है, that's I fine. don't Yeah, invest. Yeah, yeah, sure. this Bitcoin. The Uh-huh. idea how I was involved in the beginning, but I never invest. It become a trading. It become a kind of that share market gambling stuff. I don't like that. But it's turning. But still, as long as I know ever, the main purpose of it is totally different. So hopefully it's keep growing, and that's the point. But meantime, बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे हैं वो बिल्कुल पर बिल्कुल उससे नहीं. सारी डायरेक्शन Yeah. फॉर अ moment the direction change and whole उसका जो I know. credibility or like whatever. Oh, so Yeah. the yeah. So anyways, वो तो टॉपिक ही बहुत बड़ा हो जाएगा. वो तो खैर बिटकॉइन yeah. तो So मैं yeah, and you it's your field anyway. So yeah, no, Bitcoin is something different. I see it, spiritually and philosophically. So okay. we can talk about Yeah. it some other day. Appreciate, Okay. yeah. Okay. Have No, have a I good one. know Take care. No this. problem. Okay, you too. Bye. Yeah, bye bye.